Hello. Just checking for that. Just like national. Phone നല്ല നടക്കുന്നത്.
Hello everyone, do you hear me? Yes, hello. You're able to hear me now? Yeah. का प्रॉब्लेम आहे? हो ना. आणि मी बरोबर दिसतं का माझा फेस आता? नाही. Hello everyone. हॅलो. हेलो राम सर। हाँ बोलिए। सर वो लिंक चेक कर दीजिए ना एक बार, मैंने वो यूट्यूब का कर लिया हूँ। क्या क्या बोल रहे रोशन भाई? वो यूट्यूब का जो आपने बोले थे कि वो लाइव नहीं आ सकते करके, तो वो सेटअप कर लिया हूँ बोला, आप एक बार चेक कर लीजिए बोला। अभी कर लिए, देख लेना एक बार लिंक। हो गया क्या अभी? हाँ अभी हो गया, एक ग्रुप में डाल दिए। अच्छा अच्छा, तो वही लिंक अभी शेयर कर दूं सबको? हाँ शेयर शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो। ओके और सर। ये फेसबुक सर में एक बार डाल मुझे फिर दिए। से कीजिए सर, सेंड आप लोगों की लिंक। ठीक है, ठीक हाँ है। ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं ना, लाइव ऑन यूट्यूब स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे। हाँ हाँ। इधर क्या करना आप, ये टच करते तो कॉपी स्ट्रीमिंग लिंक आता। ओके ओके, यही वो आप भेजना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके, ओके। फॉर पब्लिक ना सर? हाँ पब्लिक है, पब्लिक। ओके ओके।
भाई तो को होस्ट दिया दिया है सचिन भाई, अभी जी, देन डॉक्टर वर्षा और आपका नाम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ। एक बार आप पूरा आपका फोन और नेटवर्क और आपका पूरा एक बार चेक करेंगे ना? एक बार बात करेंगे, टेस्ट बात करें। Am I audible to everyone? Yeah, hello, good evening everyone. Am I audible? Yes, yes, sir. Yeah, good evening, Dr. Ram. Good evening, sir. Harigar, how are Good you, evening, sir? sir. Good evening. morning. Sir, there is some confusion about the YouTube official link. Which one supposed to be used? Yeah, it's given, sir. Now it's good. The latest one that you posted? Correct. We are testing earlier. Actually, they wanted on the Rashtriya OBC Mahasangh this one account. It is not set up live actually. That's the reason we set up on the Lead India Liberty. Okay. So, but is it communicated to all the participants? Yes. Yes. Okay. Thank you, Sachinji. So the one ending with 4QVY is the official one now? Yes. That is the only thing available in the group. All others I removed actually from the group. Okay. Yeah, only one is available. Sachin Bhaiya, you need to communicate multiple times this one. And also on the website, sir, can we show on website the same YouTube channel? Dr. Ram, you are on mute. Yeah. Sir, can I have the question again? Yeah. Can we have the same YouTube channel played on the ROBCM website? Yeah. Just we need to put it there, this link, But and play it. Sachin Bhaiya, do we have a webmaster who could do that for us quickly? Yeah. Okay. कोणती चॅनल पाठवायचं आहे? YouTube पाठवायचं आहे. ते YouTube वर आपल्या वेब पेज वर नाही दिसणार का मग आपलं YouTube दिलंय ते? का बरं?
हा. हा, ठीक. नाही टेस्टिंग चालू आहे. मी पाहते ते आपण इकडून बसायला मी करतो मी जॉईन माझ्या हा? मोबाईल करतो मी. माझा तर वेळ आहे ना, संध्या शेवटी आहे. हा? नाही जॉईन तर होईल ना. युट्यूब पाठवतो तुम्हाला. त्यांचं होईल. बरं. Link share. जावयाला भरतीला बेड नाही भेटत आहे. थोडी भरती आहे. शेतामध्ये. So, Dr. Are you ready to start after 10 minutes? You can start your the introduction part, right? Dr. Varsha? Sir. Yeah, you have are you ready for the introduction part at about 10 more minutes? So all the MCs are ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You sir. have everyone's bios, right? Yes, sir. Yes. Okay, okay. सचिन भाई आपका लाइटिंग अच्छा नहीं है, आपका फेस नहीं दिख रहा है. Okay. और ठीक है सर अभी. हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना. थोड़ा लाइटिंग है तो डाल सकते तो अच्छा लगता. अभी फेस के ऊपर. असं कर नहीं. ठीक है, अच्छा है, अभी तो अच्छा है. अभी अच्छा ठीक है. हाँ, अच्छा. और Mrs. Aboli, are you good with all the introductory material and also the bios of all the speakers? You are good. You are good, right? Yeah. Okay. So I think Dr. Varsha will start, then you will join her in welcoming all the guests. Yeah, Sachin Bhaiya, who is doing the opening statement? Huh? Who is doing the opening statement, like before inviting? पहिले कोण ओपनिंग करणार? सर आप. Myself? Okay. And somebody is going to invite me, with my bio? Yes, sir, myself. So you have that? Yes, sir, I have. Okay, thank you. बस. And Hello, Dipandapalli sir. good morning, good evening, sir. How are you? That's fine. How are you? Excellent. Good to see you.
that Varsha Vaidya will start the program, then Aboli will introduce you, Okay, and then you have to speak. excellent. Yes, we are set. We are set. So all the MCs, if any mistakes are there, don't worry about that. Don't try to correct or anything. You just move on. Okay. Okay, sir. Don't do like the last practice session. It is a live session. You just go ahead. If any corrections, don't worry about it. Okay. Okay. And other MC leads, don't try to correct anyone. Let them move on. And for the next speaker, they have to correct. Offline, you can talk over the phone or you can message them on the WhatsApp. That's how you have to educate them separately, but not on the line. तिकडे जाणार आपला चेहरा. Right. So 5 more minutes to go. Dr. Varsha, please be ready. And then Abodi, please be ready with the bio of तिला सांगितलं बोलायला. Dr. Hari. अरे Okay. तिला द्यायचं आहे ना ऑडिटोरियमचं सांगितलं. And I request all of you to go on mute when any one person is speaking. Okay. I will mute all the people. Now I am muting all the people. Whoever required to unmute, you can unmute. So now I am making myself unmute. So I muted everyone. So Sachin bhai, your live to YouTube live is good, right? You checked it. Roshan, are you there? But Yes, you sir. should turn on only in 8 minutes from now, sir. All of this will be recorded, right? Yeah, actually we need to cut it, sir, in the live because they wanted to Okay. make it a live. हाँ गुड ओके ओके है सर. ठीक है सर. Yeah. ठीक है सर. Roshan, are you there? Yes, sir. हाँ ओके. But you should turn on only in 8 minutes from now, sir. All of this will be recorded, right? ओके ओके. Yeah, actually we need to cut it, sir, in the live because they wanted make it a live. हाँ गुड ओके ओके. So whoever is playing the YouTube also, you turn it off on the same device or computer nearby. It will give some disturbance to the other audience. Actually, don't play two at the same time. हेलो. हाँ हाँ ऐसा व्हाट्सअप करा था. Any checking करना पड़ेगा तो अभी करना चाहिए और 5 मिनट में हम शुरू करेंगे. Am I audible, sir? Yes, yes. Okay. And sub MCs कैमरा में आना पड़ेगा, right? Sir, it's on the speaker mode, right? Namaskar, Hari. Namaste, namaste, brother. How are you? Namaste. I'm fine, brother. Fine. Start and everything where is it from this?
If anyone is not at here, please call them now and ask them to join immediately. Any important persons. Dr. Varsha, can you just read out the sequence? First one, that is Dr. Harikeshan Epanapalli. Then next one, Dr. Taiwade sir. Then third, Honorable Pradeep Kumar Dange. Then next, Honorable Vijayji Vadattiwar. Then Honorable Justice Ishwara Hassan. Then Honorable Rajendra Pal Gautam. Next, Honorable Dr. K. Lakshman. Then Honorable Rajkumar Saini sir. Then Inderjit Singh sir. Then Honorable Karunanidhi. Then Dr. Seema Mathur. Then Honorable Hansraj Jangir. Then Honorable Jajula Gaur. Then Advocate Dharmendra Singh Kushwaha. Then Honorable Jaspal Singh Khiwa. Then Honorable V.R. Joshi. After that, Honorable Rakesh Yadav. Then Honorable Ayaz Ahmed Qureshi. After that, presidential address and vote of thanks. All the MCs are available. Sister, you can also kindly pronounce correctly the names, okay? Maybe the different states, they have different accent. For example, my name is Ishwar. If you remember Ishwar, Justice V. Ishwaraya. Dr. Varsha, please note down and Okay, sir. correction of it. Okay. Then all MCs are also ready, right? Any MC is missing, please find out the alternative to adjust the MCs. Okay. Dr. Varsha, you can start now and start the session. Whatever today's event, yeah, so time to go now. Start करूं sir? One more minute. One more minute. Okay. One more minute.
Please go ahead, Dr. Varsha. Okay. Namaskar, Swagatam, Suswagatam. Ladies and gentlemen, today we all have gathered for virtual webinar jointly organized by Rashtriya OBC Mahasangh and Mahajyoti, Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Center. On behalf of organizing committee of webinar, Rashtriya OBC Mahasangh and Mahajyoti, I, Dr. Varsha Vaidya, welcome all honorable dignitaries and respected members. The galaxy of intellective honorable guests, guest of honor, guest speakers, member of organizing committee, press reporters, welcome you all again in this webinar. All of us know that today, 11th April, is the birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule. He was an Indian social activist, thinker, anti-caste social reformer. आज का ये दिन महज एक सामान्य दिन नहीं है, एक महान भारतीय विचारक, समाज सुधारक, लेखक ज्योतिबा फुले की जयंती है. उन्हें शत शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. On Mahatma Phule's birth anniversary, we all pay humble tribute to him for his visionary efforts. On this auspicious occasion of birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule, Rashtriya OBC Mahasangh and Mahajyoti organize a webinar. The inaugurator of webinar, Honorable Vijayji Wadettiwar, Minister of OBC Welfare Maharashtra, President Honorable Ashokji Jutode, all honorable guest speakers, organizing committee members, welcome you again. महात्मा ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे. समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान करने का काम उन्होंने किया, जो हमेशा भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे. He was one of the most prominent champion of social justice, who dedicated his life for upliftment of the downtrodden and women's education. So humble tribute to Mahatma Jyotiba Phule. On the birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule, Rashtriya OBC Mahasangh and Mahajyoti organized a webinar to discuss some important issues like conduct caste-wise census, separate ministry for OBC at central government, remove creamier, reservation in promotion to OBC employees, Rohini Commission, separate constituency of OBC in Lok Sabha and Vidhan Sabha, Bharat Ratna to Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule. All honorable speakers throw light on these issues in this webinar. Without wasting much of the time, let us move towards to attend honorable speakers' views. Now I request Aboli Thakre to introduce Honorable Dr. Harikishan Eppanapalli. Thank you so much, ma'am. In such a special occasion, we are honored to have Honorable Dr. Harikishan Eppanapalli with us. Dr. Hari Eppanapalli is a chairman of AIBCF Council Lead India, USA, a financial service professional, an entrepreneur, and a philanthropist with a passion for healthcare, education, and the environment. His mission has been to transfer youth into responsible citizens, to establish a peaceful society for harmonious living. Dr. Hari Eppanapalli, serving as the Global Ambassador and Chairman of the JNTU, Hyderabad Alumni Associations. Dr. Hari Eppanapalli worked closely with 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on the Lead India movement since 2008. Dr. Hari Eppanapalli is a visionary mentor, founder, and chairman of Lead India and Liberty Foundation. He is an advisor to alternate development organizations in Norway and the founding board member and serving as the vice president of Financial Policy Council think tank organization with a mission on Wall Street, Main Street, and Washington to promote an entrepreneurship. I welcome Honorable Dr. Hari Eppanapalli on the behalf of Rashtriya OBC Mahasangh and request to address us. Thank you. Thank you very much, Mrs. Aboli Thakre, for that graceful introduction. Good evening, brothers and sisters.
A warm welcome to the National Convention organized by Rashtriya OBC Mahasangh and also the All India Backward Classes Federation under the leadership of President Babeb Rao Tavde and General Secretary Sachin Rajurkar and our beloved Justice V. Ishwaraya ji, the President of the All India Backward Classes Federation, and the entire supporting team who made this possible. I'm very grateful for inviting me to deliver the welcome address at this national convention on this historic occasion of 194th birth anniversary of a great leader, Mahatma Jyotiba Phule, to discuss on the very burning issues of our OBC community. As Ms. Varsha mentioned before, the main issues are conduct caste-wise census, separate ministry for OBC at the central government, remove creamy layer, reservation and promotion to OBC employees, Rohini Commission, separate constituencies of OBCs in Lok Sabha and Vidhan Sabha, and Bharat Ratna to Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule. And I would like to recognize the presence of distinguished guest speakers today who took time off from their busy schedule to join us on this auspicious occasion to share their views. Honorable Vijay Vadediwar, Honorable Rajendra Paul Gautam, Honorable Justice V. Ishwaraya ji, Honorable Dr. K. Lakshman, Honorable Rajkumar Saini, Honorable Inderjit Singh, Honorable Dr. Baban Rao Taiwade, Honorable Ashok Javatode, Honorable Dr. Sudarshan Kumar, Honorable G. Karunanidhi, Honorable Dr. Seema Mathur, and our dear brother Sachin Rajurkar, Dajula Srinivasji, and all the distinguished leaders who came from different states and different parts of the country, and our women leaders, Advocate Rekha Barahateji and Kalpana Mankarji. Let's have a big round of applause for these dignitaries who joined us today. Thank you so much for joining us, and we welcome, and we would like to hear from you all the opinions and action items for the issues that we mentioned. Today is the very historic day. It's 194th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule. Let's pay tributes to this great leader who was born on April 11, 1827 and left us on 28th November 1890. Was a great Indian social activist, thinker, anti-caste social reformer, and writer from Maharashtra. His work extended to many fields, including eradication of untouchability and the caste system, and for his efforts in educating women and exploited caste people. He and his wife, Savitribai Phule, were pioneers of women education in India. Phule started his first school for girls in 1848 in Pune, and also, along with his followers, formed the Satya Shodhak Samaj to attain equal rights for people from exploited castes. People from all religions and castes could become part of this association, which worked for the upliftment of the oppressed classes. What a great visionary, Mahatma Phule. He regarded as an important figure in the social reform movement in Maharashtra. He was bestowed with the honor of Mahatma title by Maharashtrian social activist Vittal Rao Krishnaji Vandekar in 1888. Phule inspired our great leader B.R. Ambedkar, the first Minister of Law of India and the major architect of the Indian Constitution. Ambedkar had acknowledged Phule as one of his three gurus. Through this national convention, let's request the government of India to recognize the most deserving couple, Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule, with the highest civilian honor of Bharat Ratna. Friends, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic supposed to secure for all of its citizens social, economic, and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuming the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In reality, justice is not really served to the underprivileged people. Democracy is supposed to be by the people,
of the people and for the people. We, 52% of the OBCs, are the majority in the nation, but are far from ruling the nation. To put an end to this injustice, social reformers like Sant Ravidas, Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Sahu Maharaj, Sri Narayan Guru, Dr. Babasaheb Ambedkar, Punjab Rao Deshmukh, Periyar E. Ramaswamy, Baba Amte. So many great leaders dedicated their lives to educate and enlighten the backward classes for securing the social justice. Let's continue our fight with their inspiration to protect the interests of our people and demand for separate constituencies for Lok Sabha and Vidhan Sabha. If you look at the United Nations at a global level, they started the 8 Millennium Development Goals in 2007, did not achieve them. They relaunched 17 Sustainable Development Goals in 2016, expected to cost $5 to $7 trillion every year, contributed to the member nations to achieve them until 2030. But friends, COVID-19 pandemic has impacted millions of youth around the world and also restricted the mobility, and it is projected to cost, estimated, over $82 trillion over the next 5 years, and 2 out of every jobs lost may not come back. There will be reduced liquidity in the market and increased borrowing costs. Inequality gap will widen in the society that will lead into political unrest. UNESCO estimated over 1.5 billion students around the world are affected. Unfortunately, due to the COVID-19 impact, every country is facing challenges to keep their economy going. So the UN may not get the required contributions from the member nations to achieve these hefty sustainable development goals, to achieve the health, education, employment, gender equality, peace and justice, etc. But this will definitely impair the economic development that will have huge impact on our OBCs in India as well. If you look at the global statistics, the current population of India is over 139 crores as of this morning, based on Worldometer calculations. India is equivalent to the 17.7 of the world population. India ranks number 2 in the list of countries. India is expected to cross the China's population by 2027. And the median age in India is 28.4 years, and average age of working Indian is 29 years, the youngest workforce in this world. Unfortunately, there is no official data available on our OBC population of India. So let's demand the government of India to make sure the 2021 includes the caste-based census so that we know our own population, so that we get our share of resources allocated accordingly. So the other backward classes is collectively termed, used by the government of India to classify castes which are educationally and socially disadvantaged. It is one of the several official classifications of the population of India, along with general class, scheduled classes, and scheduled tribes. The OBCs were found to comprise 52% of the country's population by the Mandal Commission report of 1980. There is substantial debate over the exact numbers of OBCs in India. It is generally estimated to be sizable, but many believe it is higher than the figures quoted by either the Mandal Commission or by the National Sample Survey. In 1992, decision of the Supreme Court of India, BCs are entitled to 27% reservations in public sector employment and higher education. In a recent reply to a question in Lok Sabha, the Union Minister Jitendra Singh Ji informed that as of January 2016, the percentage of OBCs in central government services is only 21.57%, as shown an increasing trend since September of 1993. Likewise, in 2015, at education institutes, funds meant for OBC students under the reservation policy were not used properly or were underused in cases of upgrading infrastructure, as well as violation of faculty recruitment of OBCs according to 49% reservation policy. Hence, we demand through this national convention, reservation proportionate to our population, and while implementing the allocated 27% of reservations already.
Until 1985, the affairs of the backward classes were looked after by the backward classes cell in the Ministry of Home Affairs. A separate Ministry of Welfare was established in 1985, renamed in 1998 to the Ministry of Social Justice and Empowerment to attend to the matters of relating to social scheduled caste, scheduled tribes, and OBCs. The Backward Classes Division Ministry looks after the policy, planning, and implementation of programs relating to social and economic empowerment of OBCs, and matters relating to two institutions set up for the welfare of OBCs, the National Backward Classes Finance and Development Corporation and the National Commission for Backward Classes. Hence, we demand through this national convention to establish the OBC ministry at the center and also at the state levels where applicable. Under the Article 340 of the Indian Constitution, it is obligatory for the government to promote the welfare of the OBCs. But if you look at the National Commission for Backward Classes, we see rarely a person of its membership from our communities. So this is another injustice that is we need to fight so that the government of India makes sure that the National Commission on Backward Classes is established appropriately by qualified members from our communities. Friends, to secure the economic, political, and social justice, the All India Backward Classes Federation, a think tank organization, is established under the dedicated leadership of Justice V. Ishwarayaji and Sri Hansraj Jangir, serving as the working president. It's time for all the OBC organizations around the country to unite and continue the movement initiated by Mahatma Phule and strengthen the movement further by closely working with our SC, ST organizations at the national level. Together, we'll be over 85% of the nation. No force on earth can stop us from becoming the power very soon. Friends, we cannot expect to win the race being a spectator. We need to enter the race to win. I strongly encourage to build and strengthen our organizations at every level, to increase the awareness, to unite, to fight for our rights, to institutionalize through constitution so that the laws will prevail even when governments change. We must realize that politics drive economics. Let's train our cadre to become politically active and encourage them to contest in elections irrespective of their political affiliation. Eventually, we must establish a political party of our own to contest in the elections. We must establish an entire entity to make sure our economic interests are protected and the benefits reach our community. We must establish an entity to protect our communities from social injustice. The government is working towards eliminating reservations by privatizing as much as possible without protecting our interests. If we cannot protect our own interests, do not expect others to come to protect us. Especially, we need to energize our youth and professionals like lawyers, doctors, engineers, scientists, businessmen, etc. Friends, let's increase the frequency of these webinars in every state using the technology as much as possible so that we can reach our masses and inspire and motivate them to take active role in protecting our interests. I sincerely appreciate Rashtriya OBC Mahasangh for hosting this national convention under the leadership of President Baban Rao Taiwade and General Secretary Sachin Rajurkar, and the entire supporting team who made this possible. I'm very grateful for inviting me to deliver this welcome address at this national convention on this historic occasion of 194th birth anniversary of our great leader, Jyotiba Phule. Sachinji and team, let's work together and host these webinars more frequently nationwide to increase the awareness and unite our communities. Once again, I welcome you all to this national convention. Let's hear from the distinguished speakers on these issues, possible action items for all of us to follow, especially to conduct caste-wise census, separate ministry for OBC at the central government, remove creamy layer, reservation in promotion to OBC employees, Rohini Commission issues, separate constituencies of OBCs in Lok Sabha and Vidhan Sabha, and Bharat Ratna for our great leaders, Mahatma Ji.
Jyotiba Phule and Savitribai Phule. Thank you so much. Please take care and be safe. Jai Phule, Jai Bhim, Jai OBC. Thank you, sir, for opening and welcoming remarks. Now I request Sonali Vaidya to introduce Honorable Dr. Babanrao Taiwade, National President of Rashtriya OBC Mahasangh. Hello everyone. Today is a big day of my life that I got the opportunity to introduce my mentor, the giver of needy people, high simple living, high thinking person, Honorable Dr. Babanrao Taiwade sir, Chairman of Rashtriya OBC Mahasangh. Dr. Taiwade sir is also President of Maharashtra Commerce Teacher Association since 2006. He is also ex-principal of Dhanvate National College. He is coordinator of Rajiv Gandhi Study Circle from Vidarbha. Dr. Taiwade sir constantly fighting for various social, educational, political demands of OBC. Offering a strong 40 years of educational, social and political experience, Dr. Taiwade sir coordinated and collaborated with community, educational, social and political leaders, thinkers and workers. He has been honored with various awards. He received the Best Teacher Award from Government of Maharashtra. Today, we are glad to have him as the inaugural keynote of program. So let us please call up Honorable Dr. Babanrao Taiwade sir for sharing their inspiring thought. Thank you, Sonia. आज 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले इनका जन्मदिन। उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, महाज्योति, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन वेबिनार के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर बबन तायवाड़े, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले इन्हें उनके जन्म दिवस के अवसर पर विनम्र अभिवादन करता हूं। उसी तरह हमारे फिलोसोफर तथागत गौतम बुद्ध, शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा, इन सभी मान्यवर तथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानती है, उन सभी महापुरुषों को मैं इस अवसर पर अभिवादन करता हूं। आज के इस वेबिनार में सहभागी हो रहे वेबिनार के उद्घाटक महाराष्ट्र राज्य के ओबीसी कल्याण मंत्री तथा महाज्योति के अध्यक्ष माननीय नामदार विजय वडेट्टीवार जी, मुख्य अतिथि दिल्ली के मंत्री माननीय नामदार राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जस्टिस ऐश्वर्या जी, प्रमुख अतिथि डॉक्टर के लक्ष्मण जी, माजी खासदार राजकुमार सैनी जी, सम्माननीय इंद्रजीत सिंह जी, हमारे सहयोगी यूएसए से डॉक्टर हरि पन्नापल्ली जी, श्री अशोक जूतोड़े जी, करुणानिधि जी, डॉक्टर सीमा माथुर जी, श्री सचिन राजूरकर जी, जादूला श्रीनिवास गौड़ जी, हमारे सहयोगी हंसराज जांगीर जी, वी आर जोशी जी, जसपाल सिंह जी, शिवाजी, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कछुआ जी, राकेश यादव जी, अयाज अहमद कुरैशी जी और बाकी के मेरे सहयोगी ओबीसी महासंघ के पदाधिकारी और वेबिनार में सहयोग ले रहे सभी मान्यवरों का मैं इस जयंती अवसर पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और महाज्योति की ओर से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी है कि हमारे फिलोसोफर गॉड गुरु सन्मान्य महात्मा ज्योतिराव जी फुले इनकी 194th जयंती के उत्सव में ये वेबिनार यहाँ पर
आयोजित किया गया है। आज 11 अप्रैल उनका जन्मदिन। आज ही के दिन 1827 को पुणे में महात्मा ज्योतिराव जी का जन्म हुआ था। 1840 में माँ सावित्रीबाई के साथ उनका विवाह हुआ, जब वो अशिक्षित थी। महात्मा जी ने उन्हें पढ़ाया और उसके बाद 1847 में उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शादी होने के बाद महात्मा जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 20 साल की उम्र के बाद से ही जो हम लोग बहुजन मूवमेंट में कार्यरत है, सोचने की बात है कि 20 साल की उम्र में 1847 जब हम बहुजनों को, पिछड़े लोगों को, अति पिछड़े लोगों को, वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, आदमी हो, सभी लोगों को पढ़ना ये बड़ा पाप समझा जाता था या अन्याय समझा जाता था। उस कार्यकाल में महात्मा जी ने 1948 में यानी माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद पहला स्कूल लड़कियों के लिए पुणे में स्टार्ट किया और 1848 से 1852 यानी 4 साल के बीच में उन्होंने हमारे समाज के, पिछड़े समाज के, ओबीसी के, एससी एसटी के, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के 18 स्कूल उस जमाने में वहाँ स्टार्ट किए और वहाँ पे पढ़ाने का काम हमारी सावित्रीबाई फुले, फतिमा शेख, महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने खुद किया। ये उम्र के 21-20 साल के बाद से लेकर, और उसके बाद उस 1847 1852 का अगर पिक्चर हम हमारे सामने रखते तो जब हमारे लोगों को बोलने का भी अवसर नहीं दिया जाता था, उस जमाने में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने 1853 में एक पुणे में लाइब्रेरी की स्थापना की। 1855 में तृतीय रत्न नाटक उन्होंने रचा, जिसमें हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी लोगों को कैसा मूर्ख बनाया जाता था, ये उस नाटक में बताया गया। 1860 में विधवा पुनर्विवाह जिसको बंदी थी उसको उन्होंने चालना दी। 1863 में अनाथ बालक आश्रम वो उन्होंने चालू किया। 1868 में अपने घर का कुआं अति पिछड़े लोगों को, अस्पृश्य लोगों के लिए पानी के लिए खोल दिया, जब ये पानी पीना उनके लिए बड़ा घनघोर पाप समझा जाता था या गुनाह समझा जाता था। 1869 में ब्राह्मणांचे कसब नामक किताब उन्होंने प्रकाशित की। 1 जून 1873 को गुलामगिरी ये किताब उन्होंने लिखी, जिसमें हमारे लोगों की, किसानों की एक्चुअल क्या परिस्थिति है उनका प्रदर्शन उस किताब में किया। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने की। 1875 से 1877 के इस दौरान जब बहुत बड़ा दुष्काल, जैसा अभी अपने यहाँ कोविड-19 चल रहा है, उस वक्त बहुत बड़ा दुष्काल देश में हो गया था, उस वक्त उन्होंने ये लोगों के लिए अन्न छत्र खोलकर एक समाज सेवा का काम किया। 1880 में सबसे बड़ा काम कि शिवाजी महाराज की समाधि उन्होंने खोजी, वहां पे प्रथम पुष्प अर्पण किए। 1882 में तब अंग्रेजों का राज था, हंटर कमीशन के सामने साक्ष्य दी और कहा कि हमारे पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ये सरकार ने फ्री में देनी चाहिए, और हमारे ये 52% जो हम आज कहते हैं, 80% कहते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इनको शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन देना चाहिए। ये बात सबसे पहले भारत देश में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1882 में हंटर कमीशन के सामने रखी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में
छत्रपति शाहू महाराज ने किया, और उसी का प्राविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जब हमारा संविधान लिखा, उसमें संविधान में कलम 340, 341 और 342 जो रखी गई, वो 1882 में महात्मा फुले जी ने हंटर कमीशन के सामने जो अपनी साक्ष्य दी थी, उसके आधार पर है। 1883 में शेतकऱ्यांचे आसूड नाम की किताब प्रकाशित की, उसमें किसानों की हालत बताई गई। 1885 में सत्सर अंक 1, 2 और इशारा इस किताब का प्रकाशन किया। 1887 में सत्यशोधक मंगलाष्टक प्रकाशित की। 1888 में जैसा भी हमारे पन्नापल्ली साहब ने बताया था कि बॉम्बे की जनता ने उनका सत्कार किया और वहां उनको महात्मा नाम की पदवी प्रदान, किसी ने दी नहीं, जनता ने दी हुई ये महात्मा नाम की पदवी उन्हें 1888 में अर्पित की गई। 1889 में सार्वजनिक सत्यधर्म की किताब का लेखन जब वो थोड़े बीमार थे तब किया, और इस तरह काम करते करते 28 नवंबर 1890 में पूना को उनका देहांत हो गया। मैं ये थोड़ा सा 5 मिनट इसलिए पढ़ा कि आप देखिए कि 1800 उनकी 10वीं की कक्षा माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद 1847 के बाद उनके देहांत तक कंटिन्यू वो सामाजिक कार्य करते गए और हमारे पिछड़े वर्ग की परिस्थिति लोगों के सामने और सरकार के सामने रखते गए। इस तरह से उन्होंने उनके 63 इयर्स के पूरे करियर में 20 साल उनका एजुकेशन का अगर छोड़ दिया तो 43 इयर्स कंटिन्यू अखंड काम समाज के लिए और बहुजन, ये हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने किया और एक दिशा हमें दी। और यही सब कार्य देखते हुए उन्होंने जो उस वक्त हमें दिशा दी थी, ये दिशा को ध्यान में लेते हुए समाज के मानव जाति के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, ये बात ध्यान में आने के बाद समाज के 65% प्रतिनिधित्व रखने वाले ओबीसी समाज के प्रति कुछ काम करने का हम सब लोगों का उद्दिष्ट है, ध्येय है, कर्तव्य है, ये समझकर इस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का गठन 2016 में किया गया। 2016 में गठन होने के बाद सबसे पहले हमने समाज की क्या क्या डिमांड है, क्या क्या समस्याएं है, ये ध्यान में लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने रखने का कंटिन्यू प्रयास किया। जस्टिस ऐश्वर्या जी सर हमारे साथ थे, सारी ओबीसी आज जितने भी यहाँ पर स्पीकर्स है, ये सारे लोग हमारे साथ काम करने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोग हैं। और उन्हीं के कारण 2016 का नागपुर का अधिवेशन हो, 17 का दिल्ली का हो, 18 का मुंबई का हो, 19 का हैदराबाद का हो, या 20 का ऑनलाइन सेमिनार पन्नापल्ली साहब के सहयोग से इसी तरह से लाइव वेबिनार हो, इनके माध्यम से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके सामने हम ये 65% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी समस्या रखते हैं। और ये कंटिन्यू काम होने के कारण कुछ चीजें हम लोग केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार से हासिल कर सके, जिसमें प्रमुखता से नॉन क्रिमिनल का लिमिट 8 लाख तक हमें मिल गया है। आप सभी को मालूम है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसे स्टैट्यूटरी दर्जा नहीं था। जस्टिस ऐश्वर्या सर और सारे ओबीसी लोगों के मेहनत से हमारा 2017 में दिल्ली में कन्वेंशन होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनसीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना पड़ा। हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी बच्चों के लिए एक भी हॉस्टल नहीं था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 18 बॉयज और 18 गर्ल्स के हॉस्टल स्टार्ट करने की घोषणा की। और हमारे आज के इनॉग्रेटर वडेट्टीवार साहब ने घोषणा की कि हम लोग 72 हॉस्टल्स अगले साल से चालू करेंगे। पहले से 10वीं तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं थी, वो भी हमारे यहाँ चालू की गई। फॉरेन में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर चालू की गई है। और भी बहुत सारे केंद्रीय नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, यहाँ पर भी अभी तक ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, वो भी रिजर्वेशन चालू हो गया। और सबसे बड़ा आज जो जिनके कोलैबोरेशन से हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, वो महाज्योति नाम की संस्था इस महाराष्ट्र में ओबीसी बच्चों के वेलफेयर के लिए स्टार्ट की। उसका आगे उद्देश्य हमारे डांगे साहब आपको बताएंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे आप सोचिए
कि महात्मा ज्योतिराव फुले जिस समय में उन्होंने ये काम किया, जब हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलने को भी मनाही थी, उस वक्त ये बड़े थिंकर हमारे ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उस वक्त 20वीं शताब्दी के मध्य में स्वतंत्र भारत की गठन के लिए आवश्यक मानवीय समानता को पुरस्कृत करने वाली और जाति भेद एवं धर्म भेद को दूर करने वाली विचारसरणी उन्होंने आग्रह पूर्वक रखी। इस बात का आज अमूल्य महत्व है। ज्योतिबा फुले जी के विचार स्वतंत्र और समता की ओर ले जाने वाले थे। ये उन्होंने लिखी गुलामगिरी ये किताब से ज्ञात होता है। परंपरागत समाज का रचना में रचना के विरुद्ध बंड करने वाले ज्योतिबा पहले महापुरुष थे। जैसा मैंने कहा कि उस वक्त बोलना भी एक पाप था। उस वक्त उन्होंने हमारे समाज का प्रतिनिधित्व रख के हमारी समस्याएं सबके सामने रखी। ये बंड करने वाले वो पहले पुरुष थे। ज्योतिबा एक सत्यशोधक थे। समाज के बहुतांश लोगों को सालों साल से होने वाले शोषण बंद कर सभी मानव जाति को बंधनों से मुक्त करने का विचार, यानी मानवीय हकों का विचार उन्होंने रखा। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म ये किताब पढ़ने के बाद उनके विचारों की कल्पना हमें आती है और उन्होंने जो तत्व बताए कि वह आधुनिक मानव स्वतंत्रता, समता और विश्व बंधुता, इसकी कल्पना हम लोगों को आती है। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले जी एक महामानव, युग प्रवर्तक, युग पुरुष थे। वह कर्मयोगी थे। वह सामाजिक समता के आद्य प्रवर्तक एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक। महात्मा फुले ये एक व्यक्ति नहीं तो वह एक शक्ति थी, एक विश्वविद्यालय। महात्मा फुले एक प्रखर बुद्धिवादी, विचारवंत और भारत की कृषि क्रांति के उद्गाता थे। वह भारतीय समाज क्रांति के जनक, आद्य सत्यशोधक एवं अस्पृश्यों के उद्धार करता थे। उन्हीं के विचारों का वारसा लेकर इस देश में छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, इन लोगों ने स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय की तत्व प्रणाली इस भारत देश में प्रचलित की, जिनकी आज भी समाज को जरूरत महसूस होती है। मैंने जैसा कि जब भी कहा कि भारत का संविधान लिखने में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, ये दोनों महात्मा फुले जी के शिष्य थे। उन्हीं के कारण संविधान की कलम 340 ओबीसी के लिए, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए और 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए आई, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ओबीसी को आज भी बेनिफिट नहीं मिल रहे, जिसके लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कंटिन्यू संघर्ष कर रहा है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी को संपूर्ण बहुजन जनता ये गुरु के स्थान पर मानती है। उनके विचारों की आज भी जरूरत है। आज भारत देश को स्वतंत्र होकर 73 साल हो गए, लेकिन आज भी किसान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों की परिस्थिति महात्मा फुले जी ने जो विशद की थी उससे कई ज्यादा बिगड़ी हुई ऐसा हमें समझ लगता है। और इसीलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि इस भारत देश का जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, उनके प्रगति के लिए और उन्हें समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। आज की इस वेबिनार के जिस विषय पर चर्चा होने वाली है उसमें प्रमुखता से, जैसा कि एपनापल्ली साहब ने बोला था, पहला विषय कंडक्ट कास्ट वाइज सेंसस 2021 में सेंसस होने वाला है। 1931 के बाद इस देश में हमारा ओबीसी का सेंसस नहीं हुआ। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजमेंट आए हैं, हमारे ऐश्वर्या सर जी यहाँ पर बताएंगे कि हर बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ओबीसी का सेंसस नहीं होने के कारण वी कैनॉट गिव द डिसीजन ऑन एनी पर्टिकुलर इश्यू। तो आज के एक वेबिनार के माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि आने वाले 2021 के सेंसस में सारे ओबीसी समाज की कास्ट नहीं आए, सेंसस ये करके उनका फिगर उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए। सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ओबीसी वेलफेयर एट सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि एक मेजॉरिटी ऑफ क्लास ओबीसी जो है
आज हम कहते हैं कि 65% है, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए आज तक 73 साल होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी मिनिस्ट्री नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। तो आप इस वेबिनार के माध्यम से भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द ये बड़े क्लास के लिए एक मिनिस्ट्री फॉर्म करके उनके वेलफेयर की योजना उसके माध्यम से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिमूव क्रीमीलेयर के कारण आज जो 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें दिया है, या हर एक स्टेट में अलग है, वो पूरी वैकेंसीज नहीं भर रही, एजुकेशन में पूरी वैकेंसीज नहीं भर रही बिकॉज ऑफ क्रीमीलेयर। और इसीलिए हमारी इस वेबिनार के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ये क्रीमीलेयर का जो लिमिट है ये जल्द से जल्द रद्द किया जाए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू ओबीसी एम्प्लॉयज, वो भी हमारा हक है। रोहिणी कमीशन, अभी जो हम लोग 27% ओबीसी है, इस ओबीसी का डिवीजन करना चाह रहे हैं रोहिणी कमीशन के माध्यम से। अरे ये हमारा ये कहना है कि जो 27% दिया है वही अभी हमको पूरा मिला नहीं है, किसको कितना, किसको कहां पर कितना मिला, इसका कोई डाटा नहीं है। और एकाएक ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके 4 कैटेगरी में फिर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये गवर्नमेंट लाना चाहती है। तो इस वेबिनार के माध्यम से इस रोहिणी कमीशन का हम लोग निषेध करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये रोहिणी कमीशन जल्द से रद्द किया जाए, और जिस तरह से अभी ये रिजर्वेशन पॉलिसी ओबीसी के लिए वो कंटिन्यू करके इसके पहले जैसा का कि क्रीमीलेयर का कंडीशन निकालकर सारे ओबीसी को सारे बेनिफिट जल्द से जल्द देनी चाहिए। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ओबीसी इन लोकसभा एंड विधानसभा, ये भी जल्द से जल्द लागू करने चाहिए। भारत रत्न महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को जॉइंटली भारत रत्न देना चाहिए, ये मांग सालों से चलते आ रही। महात्मा ज्योतिराव फुले का जितना काम इस देश में, उसकी बराबरी मुझे नहीं लगता कि बाकी दिए हुए लोगों की से का साथ कर सकते। यानी ये कह सकता हूं मैं कि चेले लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन गुरु जहां का है वहीं बैठा हुआ है। इसलिए हमारे सब ओबीसी मूवमेंट में काम करने वाले जितने लोग हैं, ये सबके जो गुरु है, सबके जो टीचर है, सबके जो मार्गदर्शक है, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्हें इस भारत सरकार ने जल्द से जल्द भारत रत्न देकर सारे ओबीसी लोगों को एक आनंद, बहुजन लोगों को बोल सकता हूं मैं कि आनंद की वार्ता उन्होंने देनी चाहिए। हमारे पूरे देश में ओबीसी बच्चों के लिए हॉस्टल्स नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तालुका में ओबीसी बच्चों के लिए हॉस्टल्स ये देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू करने चाहिए। हमारे फार्मर्स को पेंशन, आज पूरे देश में फार्मर्स की क्या हाल है हम सबको मालूम है, तो ये सब लोगों को पेंशन लागू करनी चाहिए। सारे कोर्सेज में बहुजन ओबीसी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप लागू करनी चाहिए। और यही सब ओबीसी समाज की प्रमुख मांगे केंद्र और राज्य सरकार ने प्राथमिकता से ध्यान देकर, जो केंद्र से संबंधित है, कुछ स्टेट अगर कुछ कर सकते तो उन्होंने देकर जल्द से जल्द पूरी करके ओबीसी समाज को न्याय देने की भूमिका ये इस केंद्र सरकार ने और हर राज्य सरकार ने निभानी चाहिए। ये इस वेबिनार के माध्यम से मैं सारे सरकारों से अपील करता हूं। और आप सब लोगों ने आज यहाँ इस वेबिनार में आकर हमारी जो एक शक्ति बढ़ाई, उसके लिए मैं आप सबका फिर से आभार व्यक्त करते हुए आपकी रजा लेता हूं। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। प्रवर्तक महात्मा ज्योतिबा फुले का महान कार्य अभी डॉक्टर तायवाड़े सर ने हमारे सामने रखा। वो व्यक्ति नहीं, एक शक्ति थे। इतिहास हमेशा महात्मा ज्योतिबा फुले को याद रखेगा। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग एड्रेस। नाउ आई रिक्वेस्ट ऋषभ राव टू इंट्रोड्यूस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रदीप जी डांगे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महात्मा Jyotiba Phule Research Training Institute. Good evening. Shri Pradeep Kumar Dange is a presently managing director of Mahajyoti as an IAS officer. He entered the state government service as a class 1 officer in 1995 under Revenue Department. His personality reached a vast experience as a sub-divisional officer, district supplier officer at various places. He supervised very successfully Nagpur district general election of 2014, also as additional district collector of Chandrapur and Bhandara district. His dedication to social cause
achieve him the very distinction of appointment as a managing director of Mahajyoti, which has just been the journey of social accomplishment. In addition to his very responsible position of Chief Executive Officer of Gondia Jilla Parishad, he dedicates his personal time for various projects of Mahajyoti. His dedication is reflected in the various projects of Mahajyoti. I request Mr. Dange sir to guide us. Thank you. Good evening, sir. As I introduce myself as a Pradeep Kumar Dange, and here is a managing director of Mahajyoti. First of all, I welcome all of you for this great occasion of 194th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule, and which is a great philosopher of India. So, as I am a managing director of Mahajyoti, as there is a Jyoti is Naam, is having a background of Mahatma Jyotiba Phule. Because of his of all his dreams, we wanted to implement in a social cause or in a social pitch viewer. We know that the Mahatma Jyotiba Phule was a contemporary Indian philosopher who is one of the greatest maker of the modern India. He was a philosopher, leader, organizer of the oppressed caste. He always practiced what he preached. He fought for the right of untouchables, women, and depressed persons. He identified the most of the important questions of his time. We know that he always put his words, put his theory, put his philosophy, and fought for against the religion, Varna system, ritualism, and British rules. He also put major questions of gender before the society. He also put a mercy of farmers before the British rule, and he wanted that the farmers should get what he wanted, what he do in his farms. So, in his philosophy, in 1948, Jyotiba began his work as a social reformer. He started giving education to the girls. He started from his own home, and he encouraged his young wife Savitribai for this cause. And later on, Mahatma Jyotiba and Savitribai both work for the society, as you all of know. So, taking these things, to execute the motto of the India's great social worker, that is Mahatma Jyotiba Phule, the Maharashtra state government has started to have some role of Mahatma Jyotiba Phule to be reflected in the society, and to take on the oath to fulfill the dream of Mahatma Jyotiba Phule to make a modern society. For this, autonomous organization, that is Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Institute, that is a Mahajyoti, was established on 22nd October 2019 for all-round sustainable development of other backward classes, deprived caste, nomadic tribes, Vimukta Jati, special backward classes. It has a great coverage to have a social, economic, and educational development of a target group. We consider the target group as a whole OBC, special Vimukta Jati, nomadic tribes, and special backward classes. And we have an objective to work for the research and employment orientation, skill development, self-employment, rural development, agriculture development, and personality development of these target. We work with for the social cohesion and harmony among the other backward classes. The organization is committed to dedicate ourselves for a creation of the modern and committed society by implementing the various schemes and the programs which are included in our objective of the Mahajyoti. As Mahajyoti is a company registered organization under Rules 8 of the Company Act. So
we decided and have our broad objective in a various sector, particularly in agriculture research, assessment, skill development, employment, capacity building, establishment and development of the industrial units, agro-industrial units, self-employment, entrepreneurship. We also work for the various data bank and conducting the various survey. As you know, as Honorable Varitiya sir is more keen on having a detailed survey of every group of the society and their livelihood, their status, their background, and what type of work we can do for those people to upliftment of these people. So we are conducting a statewide survey of every community and considering their aspirations, the youth, their family background, their family income, their educational background, their livelihood patterns, and what type of upliftment we can do. For this, we are doing a statewide survey. And according that, we will plan for their skill development, their educational upliftment, women's empowerment for the farmers. We are planning for a various activity that can increase or upgrade their skills, increase and uplift their income. That is the main objective behind that. We are also working in agriculture and cooperative research. We are also work for counseling for the students, scholars, entrepreneurs, farmers, and for the depressed and women's sections. We are already working on various training programs for the various competitive exams, training for the career development, coaching. We are also planning for various libraries to be set up throughout the state. We also making a plan for knowledge and study coordination circles in a various field. We also having objective of initiative to improve the social, educational, and economic condition to be uplifted of the target group. We are planning and we are already started some academic scholarship, fellowship to achieve their goals of the youth and the target groups through the organization and various activities. There are some major activities we have started. That is a police training, pre-recruitment police training program. We have already started. As all of you know, that there is from last 1 year we are suffering from a pandemic situation in throughout the world. So it was impossible for us to have a face-to-face interaction. So instead of that, we are started online training for those aspirants of the police recruitment. Also, we have started the JEE and NEET program online for the students who are from the rural area, particularly in a tribal belt. Those could not have their attachment with the higher smart classes or otherwise. So through online basis, we have set up a special team on this. We are providing them a devices for this, and we are conducting a live classes, and we are providing a study material, online test, practice test. Even we are providing them books to all the students. So these are the initial phases we have started in this circle. After that, we are planning, we are already started for calling the application for the UPSC and MPSC and IBPS and also for CA exams. So in the next 1.5 months, we will start all these things through an online way. Otherwise, if the pandemic situation will subside, we'll go on an offline manner. In a agriculture sector, we are taking a different approach, which is something innovative concept, which is initiated by Honorable Minister Wadetiwar sir, that we are identifying the various farmer clusters
throughout the state, considering the climatic situation, soil strata of that particular area, irrigation pattern availability. We are identifying some special crops, either oil seeds or like groundnuts or some turmeric, chili, such clusters we are identifying, and we have planned to give some incentive to them, and after their production we'll buy from them at a MSP rate, and we go for processing, and we'll process it, and we market it by the under the name of the Mahajyoti, and whatever the profit will come, will directly transfer it to the farmer. Means the farmer will have a two-way income through this. And we are planning this from the next coming monsoon season, and that will help you help the farmer in a different way. We are also organizing some women's groups. We will make them in a skill. We will survey for firstly we will survey for the skill gap. We will identify the women's, we identify their skills, we will go for the market demand, and we will set up a different type of production unit in a different places, and that will be will bridge the producer to market. Mahajyoti will as a bridge for them. These are the different activities. In a different educational sectors, we are also started some fellowships. In recent time, in last 10 days before, we are already given financial assistance to the students who have already cleared the UPSC mains exam. Who are the OBC students who clear the exams, we are already called for application from them, and we will directly transfer our financial assistance to them. We have already floated the PhD fellowship scholarship for the students, and in a coming year, we will also expand our horizon in a sector for benefiting the target group. These are the various activities the Mahajyoti are planning for. As all of you know that it's hardly 6 months that Mahajyoti has started, and from the first 3 months when the Mahajyoti was established and started his office in Nagpur, it was a spike time of Corona pandemic. So the September to December, we were just waiting to subside the situation. And when we started from the December to March, most of the things what I have discussed was started in last 3 months. And from since mid of the March, again, the situation has changed. We are waiting for the situation to be subside. And once this gets in a normal situation, we will again take a fly. And how one thing I wanted to mention is that in a different approach, we have already engaged, have had tie up with the Nagpur Flying Club, which was the company registered under the government of Maharashtra undertaking, and who is a divisional commissioner was a chairman of this. With the initiation of Honorable Minister, we have already tied up with the Nagpur Flying Club, and we are in the next 2 years, we'll create nearly 25 to 30 pilots every year for the nation service. And that is through the Mahajyoti. It will be a different approach. I think such type of activity, none other than Mahajyoti has taken up otherwise. So these are the some few things I wanted to mention here. So I request all other to just have a suggestion for the Mahajyoti. Otherwise, what type of activity can we take up? We welcome all your suggestions, and we'll try to incorporate all these things in our objective and our program. Thank you for giving your precious time for hearing me, and thank you for organizers, and especially thanks to Taiwade sir, who asked me to put some words before you, and thanks for hearing me.
Thank you so much. Thank you, sir, for valuable information. Now I request Varsha Phule to introduce inaugurator of this webinar, Honorable Vijayji Wadettiwar, Minister of OBC Welfare, Maharashtra. You are not audible, Varsha. Hello. Okay. Hello. Vijay Wadettiwar is the current Minister of the Department of Other Backward Classes, Socially and Educationally Backward Classes, Deprived Caste, Nomadic Tribes and Special Backward Classes Welfare, Salt Land Development and Earthquake Rehabilitation. He was also Minister of State for Irrigation, Tribal Welfare, Environment and Forest in 2008 to 2009 and Minister of Affairs in 2009 to 2010. He is a member of parliament elected from Brahmapuri Assembly constituency on a ticket of Indian National Congress. He is known as an OBC leader and is constantly striving for various issues of other backward classes. He had taken an aggressive stance to prevent the Maratha community from being included the OBC community. I welcome to Honorable Vijay Wadettiwar, sir. थैंक यू। एक आज के इस वेबिनार में जिसको 19वीं सदी का योद्धा कहना चाहिए, उनकी आज जयंती के इस समारोह में आप जो भी पार्टिसिपेट, सबको मैं बधाई देता हूं और सबका मैं स्वागत भी करता हूं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और भारत के दलित, शोषित, वंचित और समाज के और महिला को नई चेतना और सामाजिक समानता का ज्ञान संदेश देने वाले महान महात्मा के इस जन्मोत्सव पर मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी को, वेबिनार में उपस्थित सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज जिन्होंने 19वीं सदी में एक गुलाम जो समाज कहता था, उस समाज के लिए सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तान में जो पिछड़ा समाज है, विशेष रूप से जिन्होंने महिलाओं के लिए जो पहला कदम सावित्रीबाई के साथ उठाया, और मुझे जब जहां तक पता है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने यूपी में केवल महिलाओं के लिए कुछ स्कूल खुले थे, उस स्थिति में जो उच्च जातीय, उच्च वर्णीय समाज महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ था, उस वक्त महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना सावित्रीबाई फुले के साथ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कदम उठाया। उनका यह कदम जब उठाया गया तब उनको काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मुझे जहां मैं आपको यह भी इस वेबिनार के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो किताब लिखी थी, एक क्रांतिकारी करके पूरे हिंदुस्तान में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लिया जाता है। एक भारतीय विचार और सामाजिक सेवक, समाज लेखक करके उनका नाम सबको पता है। उन्होंने गुलामगिरी नाम का अगर किताब आप पढ़ोगे तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि सत्यशोधक समाज की किताब हो या गुलामगिरी हो, आसूड हो, शेतकरी आसूड, किसान के लिए लिखा था। इन सबको पढ़ने के बाद इनकी महानता और इनकी सोच महात्मा ज्योतिबा फुले की आपको सबको पता ही है। महिलाओं के लिए और विशेष रूप से विधवाओं के लिए उन्होंने 1800 उन्होंने इसके लिए
जो बाल विवाह के खिलाफ विरोध करके विधवाओं के विवाह के समर्थन में कदम बढ़ाया था, और ये कदम निश्चित रूप से महिलाओं को एक शक्ति प्रदान करने का काम आज भी होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर हरि इपन्नपल्ली साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप सबको किया। यहाँ पर ये वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने और महाज्योति के माध्यम से बबनराव तायवाड़े साहब का भी निश्चित रूप से यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहिए, और जनरल सेक्रेटरी हमारे सचिन जी राजूरकर, इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती के समारोह को वेबिनार के माध्यम से पूरे भारत में आप सबके विचार व्यक्त करने का, विचार को प्रकट करने का एक अच्छा मौका आप सबको इस माध्यम से मिला है। मैं यही चाहूंगा कि बाकी सब हमारे फिलोसोफर ने भी, हमारे जस्टिस ईश्वरीय साहब का तो मार्गदर्शन हमेशा हम सबको मिलता रहता है, और उनकी ताकत, उनके विचार से लेकर आज इस ओबीसी की लड़ाई में, पिछड़ों की लड़ाई में हमें एक रास्ता भी इन सब के माध्यम से मिलता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, जैसे कि बबनराव तायवाड़े साहब ने कहा था कि एक प्रतिकूल स्थिति में अंग्रेजों का राज था, और तब जो समाज के साथ कोई नहीं था, मैंने इसीलिए कहा था कि 19वीं सदी का ये योद्धा थे, और इन योद्धा ने हम सबको जो अन्याय के खिलाफ में लड़ने की शक्ति आज भी उनके विचारों से मिलती है। ऐसे महात्मा के आज के जयंती के समारोह में महाज्योति के माध्यम से हो, हमारे एमडी डांगे जी ने अभी जो हम महाज्योति के माध्यम से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, उस बारे में भी उन्होंने सबको अवगत कराया। ये जो सोच हमारी बनी है कि पिछड़ों का, ओबीसी का लड़का ये कमर्शियल पायलट बने, ये पहला कदम हमने उठाया। इसीलिए हर बच्चे के पीछे हमने 20 लाख रुपए 2 साल में महाज्योति के माध्यम से और कमर्शियल पायलट बनाकर हर एवरी ईयर 25 to 30 बच्चों को, जो केवल अर्बन एरिया से नहीं, तो हमने इसमें भी रूरल और अर्बन एरिया से भी 50% बच्चों को सिलेक्ट किया। आप सबको ये बताना चाहूंगा कि महाज्योति के शुरुआत से हमने जो 22 हॉस्टल का भी काम जो है, इसकी प्रेरणा जो मिली, ये जो मंजूरी भी मिली, ये इसमें राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का जो हिस्सा बहुत बड़ा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे एक्स सीएम विलासराव देशमुख साहब ने महाराष्ट्र में ओबीसी बच्चों के लिए 50% स्कॉलरशिप का पहला काम शुरू किया। आज 650 कोर्सेज को हम लोग स्कॉलरशिप देते। मैं इसमें हर साल एवरी ईयर मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ, 25-50 कोर्स को बढ़ा रहा हूँ, और हमारी अर्थव्यवस्था स्टेट की देखते हुए अभी आपको पता है कि 19 कोविड के माध्यम से आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, और हमारे आने वाले दिनों में 100% स्टेट से स्कॉलरशिप देने का इरादा हमने किया है। थोड़ा सा इस कोविड से हम बाहर आए और हमारी स्थिति थोड़ी मजबूत हो, तो 100% स्कॉलरशिप भी हम देने का काम आगे में निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। यहाँ पे आनंद जी कुलस्ते साहब भी है। मैं कुछ हिस्सा अगर केंद्र सरकार भी ये ओबीसी के स्कॉलरशिप में उठाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि ऐसा एक ही स्टेट है महाराष्ट्र में जो 50% स्कॉलरशिप नियर अबाउट हम लोग 2000 करोड़ ये स्टेट के माध्यम से इन बच्चों को, ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं।
तो इनमें भी थोड़ा सा अगर एक कदम आप लोग सब बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि 100% हम स्टेट मिलकर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 50-50 का भी अगर कुछ हमने हिस्सा उठाया तो 100% स्कॉलरशिप देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में यहाँ पे हमारे बबन राव तायवाड़ी साहब ने थोड़ा सा उसमें बात की। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में ओबीसी के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और जो निर्णय अभी अभी आया था लोकल बॉडीज चुनाव में जो ओबीसी का परसेंटेज के बारे में लेकर, तो वो निर्णय के खिलाफ हम तो अपील में हम लोग है, हमने उसके खिलाफ में स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ हमारे सीनियर जस्टिस को लगाया है। बट ये जो निर्णय होने के बाद उन्होंने जो डायरेक्टिव दी उसमें आप सबको बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी ओबीसी के लोकल बॉडी चुनाव में जिला परिषद में जो जिला परिषद होती है उसमें सबका मेंबरशिप कैंसिल करने का काम भी किया है। तो जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट थे उनका इलेक्शन कैंसिल किया। इसके खिलाफ में हम लोग अभी गए। ये महाराष्ट्र की बात मैं कहूंगा, मुझे इस वेबिनार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सेंसस नहीं होने से हम लोग ये रिजर्वेशन कितना हो सकता है इसके लिए स्पेशल कमीशन अपॉइंट करने की बात भी उन्होंने की है। हम लोग कर रहे हैं। हमें सबको मिलकर महात्मा ज्योतिबा जी के इस जयंती समारोह में महोत्सव के माध्यम से आज के हम सबको मिलकर, जैसा कि इपन्नपल्ली साहब ने कहा था कि हमारा सेंसस ओबीसी का जात न्याय होना चाहिए, उस माध्यम से हम तो हमारे महाराष्ट्र के असेंबली ने भी एक रिजोल्यूशन पास करके रखा है। जो हमारे एक स्पीकर थे नाना पटोले जी, उन्होंने भी ये हमारे फ्लोर पे रखा था। मैं यही चाहूंगा कि हम सब मिलकर हमारे ओबीसी का अलग से सेंसस होना चाहिए, यह आवश्यक है, इसकी जरूरत है, तभी हमारा पता चलेगा। और हमारे हक के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पहला अधिकार हमको दिया था 340 घटना में 340 के कलम के माध्यम से, कि पहला अधिकार हमें मिला था। बाद में उन्होंने एससी और एसटी को ये किया 341 और 42 में, और 340 में आधार पर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको हक दिलाने का काम किया। और हम लोग उससे जो मिला है उसमें पर्याप्त रूप से आगे बढ़ने के लिए उनके तो आभार व्यक्त हम करेंगे। इसके आगे भी जो आज का तकलीफ की बात क्या होगी, तो हमारे इपन्नपल्ली साहब ने जो कहा था कि रोहिणी कमीशन, अब यह रोहिणी कमीशन में हमको टुकड़े टुकड़े में बटाने की बात आगे हो रही है। हमारे टुकड़े टुकड़े करने का भी बात हो गई है। इसमें आपको हमारे कुलक्षे साहब से रिक्वेस्ट रहेगी और हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम ये कमीशन को लागू मत कीजिए। हम लोग 27% रिजर्वेशन मिलता है। हमारा पॉपुलेशन जो भी है, हमारे इसमें बहुत सारे पिछड़े जातियां हैं। आज हम सर्वे करने का काम शुरू किया है महाज्योति के माध्यम से। आज आपको बता दें कि पाल में रहने वाले लोग कितने हो गए, जो हमेशा घूमते रहते हैं। एक टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं होता है, जिसमें वडार समाज होता है, नंदी बैल वाला होता है। बहुत सारे ऐसे समाज है ये ओबीसी में है जिनको आज उनको हेल्प करने की आवश्यकता है। पर हम लोग अगर इसमें अलग अलग 3 हिस्सों में बंटवा देंगे तो हमारी लड़ने की, हमारा संघर्ष करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। हम लोग अपने हक के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम आज 60%, 55% होने के बाद भी हम इकट्ठा नहीं हो पाते। हमें ये आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी के ये महात्मा के जयंती के अवसर पर हमारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही अंधश्रद्धा डाली गई है। इनको निकालने की आवश्यकता होती है। ये उसमें बटे हैं। ये इनको ज्यादा डर भगवान के नाम से इनके दिमाग में जो डाला गया है, अंधश्रद्धा के नाम पे डाला गया है, तो इसको भी निकालने की आवश्यकता है। इसमें ये आज बहुत बिजी हो चुका है। ये हमारे इससे बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने में थोड़ा कमजोर हो चुका है। तो मेरी इसमें आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत सारे वक्ताओं ने, हमारे तायवाड़ी साहब हो, हमारी पन्नपल्ली साहब हो,
अभी हमारे डांगे जी ने भी अपने विचार ये रखते हुए हमारे एक सत्यशोधक समाज के प्रणेता और किसानों के लिए लड़ने वाले, पिछड़े के लिए लड़ने वाले इस महात्मा की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन कर आप सबके बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे वेबिनार में आए हैं और उनके विचार भी हमें सुनना है। पर हमारे एमडी जी डांगे जी ने हम महाज्योति के माध्यम से जो भी करने जा रहे उनका भी जिक्र और वो भी सब कुछ यहाँ रखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम किसी की परवाह नहीं कर रहे। ओबीसी के हक के लिए ये प्रेरणा महात्मा ज्योतिबा फुले ने दी और आज मैं हमारे ईश्वरिया साहब जो है ये हर कोई कार्यक्रम में जब आते हैं तो उनका स्पीच होता है तो हम लोग सुनते हैं और एक ताकत से हम लोगों को एक प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। जैसे कि बबन राव जी ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का मैं भी उसमें शुरुआत से काम करने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में उनसे जुड़ा था। आज मैं भले ही स्टेट में ओबीसी का मिनिस्टर हूँ और मैंने बहुत बड़े बड़े रैली भी ओबीसी के लिए शुरू की थी। अब ये कोविड की वजह से उसको रोकना पड़ा और इसके माध्यम से हमें भी कुछ टारगेट ओबीसी लीडरों को जो बाकी हमेशा करते वैसा भी टारगेट करने का काम भी कुछ बड़े लोगों ने शुरू किया था। तो आखिर लड़ना है समाज के लिए, जो प्रेरणा मिली है इस ओबीसी के हक के लिए हम तो लड़ते रहेंगे और आप सब के साथ इकट्ठा होकर, चाहे राज्य सरकार की नीतियों हो, मैं जहां मिनिस्टर हूं, चाहे केंद्र सरकार की हो, इतना बड़ा समाज होने के बाद भी इनके तरफ इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सबको एक साथ लड़ने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक आप ये वेबिनार के माध्यम से आप सबके विचार सुनने के बाद और ये जयंती समारोह में भाग लेने के लिए जो ये कार्यक्रम का आयोजन हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तरफ से किया गया, मैं उनका बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत तो बातें तो करनी है पर समय है, मुझे अभी सीएम के साथ में और एक हमारी मीटिंग भी है, हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग है, उसमें भी मुझे हिस्सा लेना है। मैं थोड़ा समय के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए थोड़ा आपसे इजाजत लूंगा और एक अच्छा कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से आप सबके विचार सुनने के लिए यहाँ आयोजित किया। इस महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके प्रेरणा के साथ, आपके विचारों के साथ हमेशा एक शक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और ओबीसी पिछड़ा जाति इसके लिए, हक के लिए हम लोग अग्रसर होते हुए काम करेंगे, यही मैं कहूंगा। और आपको सबको इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद और जय ओबीसी। Thank you, sir, for your valuable message. It will be a great pleasure for us to listen in future events. Thank you, sir. Now I hand over the mic to Abodi. Thank you so much, ma'am. The moral arc of the universe is long, but it bends towards justice. We have a guest of honor, Justice V. Ishwaraya. I would like to call Ms. Sonia Vaidya to introduce our guest, Honorable Justice V. Ishwaraya. Jai OBC everyone. It is great pleasure to introduce Honorable Justice P. Ishwaraya, former chairperson of National Commission for Backward Classes from 2013 to 2016. He was the Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh. In India, he was evaluated to the constitutional post as Additional Judge of Andhra Pradesh High Court in 1999 and then as a judge in 2000. Government of India appointed Justice P. Ishwaraya sir, former acting Chief Justice of Andhra Pradesh High Court. He was also worked as government leader for 5 years from 1990 to 1995. Justice V. Ishwaraya sir continuously fighting for the fulfillment of the demands of OBC community. Presently, he is a chairperson of Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Mandatory Commission, Government of Andhra Pradesh. So I request Honorable Justice V. Ishwaraya sir to please come and share their valuable thoughts.
Justice Ishwaraya ji, please unmute. Please unmute. Thank you. Okay, sorry. So I especially thank the organizers of Rashtriya OBC Mahasangh, say Baban Rao Tayawade ji and Sachin Rajwarkar ji, under the guidance and the dynamic, the advice of Hari Panapelli, Dr. Hari Panapelli, and especially my thanks to the Vijay Vadativar who has inaugurated this Mahatma Jyotirao Phule, the birthday celebrations. And I also thank all the speakers who have been waiting to contribute their valuable suggestions today. Then now all over the India, the people are celebrating the Mahatma Jyotirao Phule, the Jayanti Mahotsavam in their own way, and all the chief ministers and the prime minister and abroad the country also, they are celebrating the Phule Jayanti Utsavam, because the Phule Jayanti is Phule, he is a great, he is the father of the Indian social revolution, and he is the person who has had a great thought and in his mind, and the main reason for this social discrimination, caste system, and this backwardness is only the education. Education, especially among the backward classes. I mean, the backward classes means, as per under Article 16(4), backward classes means the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes who are required to be identified under Article 340 of the Constitution of India. No doubt, Rashtriya OBC Mahasangh, it's a Rashtriya OBC Mahasangh, because there are already the constitutional protections have been given for SCs, STs. Therefore, they would like to organize the OBCs, but All India Backward Class Federation takes into everybody in its fold, that is all the backward classes, that is the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Because backward classes, they consist 50% of the nomadic, above nomadic, wandering and begging classes are in the central OBC list. And with regard to the Phule ji, Mahatma Jyotirao Phule ji, a wonderful introduction has been given Hari Panapelli ji, and the what is the future steps have to be taken, and the Baban Rao Tayawade also and the minister also has taken wonderful guidance, but I will not repeat and any one of the same, but only thing is, insofar as his vision, you see his vision in those, though Phule ji born in a Malik caste community and his father was a vegetable vendor, and on the advice of his friend, because he was an intelligent boy, he was sent to the school. My namaskar, Dr. Lakshman ji. I'm sorry, just now I'm seeing Lakshman ji is holding a very good. It's a very fortunate for all India OBCs, because he is very committed man, and his party and his and RSS philosophy is different, but Lakshman is different. Therefore, we love and cherish Dr. Lakshman ji for his commitment, for his recommendations, and without fear or favor. And insofar the Phule ji are concerned, is scriptures Gulamgiri. Gulamgiri was dedicated to the blacks, to the laborers of the America. He has dedicated in the annihilation of caste, then put an end to the caste system. Then his representation before the Hunter Commission or the establishment of the Satya Sodak Samaj. Such a great man established Satya Sodak Samaj, but unfortunately, because of the social backwardness, ignorance, and illiteracy, and not having the unity, our backward classes, the elders, even now, we could not take forward the Satya Sodak Samaj in forefront like RSS.
RSS has been started a long back. Now they are very committed, and now they are reaping the fruits of their effort today. But had the Satyashodak Samaj has worked like RSS, today our rule would have been come by this time. Similarly, and one more interesting thing I will say, the Jyotirao Phule, he has lived for 63 years, 7 months, 17 days, and he left his body. He left his body in 1890. Exactly after 4 months and 6 days, Baba Sahib Ambedkar has taken birth. That means, as per our Indian philosophy, we believe the rebirth and the sanskaras. Therefore, the soul enters in the womb of mother when it is 5th month. Therefore, exactly on the 5th month it was entered, and on the another 9 months he has taken birth. Therefore, with that sanskaras, Dr. Baba Sahib Ambedkar has taken birth, and with the same philosophy and same thinking. And his vision was to educate women and though he was backward classes, but he was more interested in the scheduled caste to educate them, and even the forward class women also to educate them. Therefore, the same philosophy Baba Sahib Ambedkar, and he became the #1 educationist in the whole of the world, and he has become really. Today, is Baba Sahib Ambedkar lesson is there in the foreign countries, but we don't have any lesson about the Jyotirao Phule and Baba Sahib Ambedkar. But we used to teach about the Tughlaq, Babur, and Akbar, all these things to forget the social justice and all these things. And they were against the Brahmanicalism, the Manu Siddhanta, and the caste system, because the castes were not these by reason of their occupation. We used to call them his particular because of the occupation. We used to call him he belongs to so and so caste. Therefore, caste was not there in the origin. But of late, when Manu wrote, only the Brahmins, Kshatriya, Vaishyas were there, and Shudras was not there. Later, depending upon the occupation, these Shudras have been then created. So my namaskar, Rajendra Pal ji, Rajendra Pal, Honorable Minister for Delhi, and he is one of the again a fighter for the social justice and committed for the social justice. And especially before forgetting the Delhi government, the reforms the Delhi government is doing with regard to the education, a quality education, a free education for all the. Similarly, Andhra Pradesh government is giving the full scholarship, and the English medium, the people, lakhs of people have been shifting to the government schools because they have developed the infrastructure. Therefore, that vision of the Phule and Ambedkar is being taken forward by the Delhi government and Andhra Pradesh government alone, as and today. Therefore, education is a big investment in the society. If you make the education, for example, I will say, I don't know whether R.S. Praveen is there in this webinar or not, but there is one IPS officer, R.S. Praveen in Andhra Pradesh. He is the secretary of the social scheduled caste, scheduled tribes, and social welfare schools. Today, that girl who has climbed the youngest age, climbed the Everest Shikar, and he is an instrument to train her. Like that, because of his it's a wonderful job he's doing day and night, and he is able to motivate them, teach them, and giving a farsightedness and making them useful, and they are supporting the next generation also. So that's how, if we don't want any reservations, let the Bharat Sarkar and all the governments give a free and quality education
on par with the elite. Then our children who are the diamonds, who are glittering diamonds, they will compete. They will take their own seat and their own share. Therefore, the caste system, the discrimination, this differentiation will go by having the equal education. It is the duty of the government to impart the education at the free of cost, quality education for all. But why this government is not doing? Because of the thinking of the Manuvadi only, Manu Siddhanta only. Whichever is the successive government, whichever is the successive government, they never wanted to have the equal education, to enlighten the downtrodden, the backward classes, SCs, STs. Therefore, they are not able to then come up. Our constitution says this, the justice for all. That means social, economic, political justice, equality, liberty, fraternity. Equality means, what does it mean? Everybody will not become a minister or prime minister, but everybody will not become a laborer or scavenger or anything. But equality means equal treatment, a concern, a humanity, a compassion, a mercy, whether it is a small menial worker or the minister. But our thinking, our pattern, our perception, our treatment should change. So that kind of the education, that kind of the treatment should come. Therefore, that will go by only the proper education, proper guidance in the society, as was thought of by Dr. Jyotiba Phule ji and Dr. Ambedkar ji. So therefore, now the Jyotiba Phule was there. It was even freedom struggle was just now began. But when Baba Sahib Ambedkar, during the period of Baba Sahib Ambedkar, he was able to face all kinds of these situations. Then therefore, he was the #1 educationist. Because of his intellect, his knowledge, nobody can oppose the introduction of the fundamental rights in the Constitution about the equality and affirmative action of providing to prohibit the discrimination, provide adequate representation in the education and the employment, abolish untouchability and the child labor and human trafficking, and all those things, the fundamental rights he has introduced. Nobody was able to oppose this, though it was against the Manu Siddhanta or Manu Smriti, because there was no answer for those elite people. That is the reason why, in spite of the fundamental rights are there in the Indian Constitution, even after 73 years, we could not achieve those fundamental rights because there is no honesty, there is no sincerity, there is no will, and this kind of the work has not been taken by any of the successive governments. That is the reason why. We were begging, we were asking. When I was the chairperson, National Commission for Backward Classes, then with a small difference, with a great respect to Vadetivar and Baban of Daivode, you please take example the Phule. Phule is a backward classes, but he was more concerned for the scheduled castes and scheduled tribes and the women and the backward classes. Therefore, we the backward classes, little bit forward among the backward. And most of the 50% of the aboriginal tribes, nomadic, semi-nomadic, wandering tribes are in the backward classes. Therefore, they should also get their due share. We are not against the categorization, but we are against the de-reservation because of the Mandal Commission. 27% reservations have been given, but every year, every successive government are de-reserving. That means, as against the 27%, they are giving reservations only 9, 10, 12, 13. Now it's only 4, 15 or 16 it has touched. That means remaining seats in the employment and the education are being taken away, enjoyed by the forward classes. That is the reason why don't de-reserve under the guise of the creamy layer, and you put the creamy layer, eliminate, and if both the parents are the elementary school teachers, and if their salary crosses 8 lakhs, you treat them as a creamy layer. So this is atrocious. This is very injustice.
when I was a chairperson, then I am very fortunate to meet the Honorable Prime Minister. Then I was convinced him there cannot be any law without the provision for implementation of the provisions. Therefore, the NCPC, the national, under the National Commission for Backward Classes Act 1993, the powers that were given only for inclusion and exclusion. That's all. There was no other power. Therefore, it should be on par with SC/ST Commission. It should be given. Why it should be given? Your government will become very popular. And as a matter of fact, I have submitted the report for categorization and revision of the backward classes based on the caste census. Because if you read the Article 340 says then there should be an investigation by the commission appointed by the President of India to examine their social, educational, political, cultural backwardness and the labor under which they undergo. Because what position, whether he is a daily wage worker, weekly wage worker, whether he is having a hut or semi-finished house, or whether everything there should be. As per the Indrasani case, the Supreme Court says you have to filter whole of the Indian population, then filter it. Then who is the most backward and more backward and then forward among the backward class. Then give the equal distribution for among them. But under the guise of the categorization don't de-reserve again. Because now we are going to do, the government of India is going, I said, without the caste census, without the criteria, without the data, then the categorization is illegal, and again it amounts to de-reservation, I said. Then therefore I said, you have conducted 2011 caste census, then why don't you then publish it? Then why don't you appoint an expert group and call out what are the central OBC caste communities in that? Then Panagaria was appointed as expert group vice chairman. Then that never saw the light of the day. Then when I was chairperson, they said they will give the access to the data, but that they never gave the access to the data. And though they have symbolically asked to conduct the revision and make an attempt to categorization, they never did. I said I can't categorize without the caste census. Therefore, now Maharashtra, there was a act just like Andhra Pradesh in the that is Andhra Pradesh, that is 343D, political reservations in the local bodies, panchayat and municipalities. They said there are reservations for the scheduled caste, scheduled tribes in the local bodies in proportion to their population. But backward class is concerned, the states were given a power to make a provision reserving the backward classes. Therefore, the state governments have made a provision. Then some reservations are given. Then Supreme Court says, now these as per the triple trust conditions required to be complied by the state before reserving the seats in the local bodies of the OBCs has not been done so far. That is to set up a dedicated commission to conduct the contemporaneous, rigorous, empirical inquiry into the nature and implications of the backward classes local bodies with the state. Number 2, to specify the proportionate reservations required to be provisional local body wise in the light of the recommendations of the commission. So, so as not to fall flow of the overbreadth. Third, in any case, such a reservation shall not exceed 50% of the total seats in favor of the SC/STs, OBCs. These triple seat, though the government, some government wants to extend extend the limit of reservations. Supreme Court coming in the way. And every time they are saying, when the reservation issues comes, where is the census, where is the data, your population is 40% or 54%, where is the data? And they ask the questions. But the government of India declared, when the BJP government came into power,
Then Rajnath Singh, the Honorable Home Minister, then declared that we are going to conduct the caste census of the OBCs also. Then they turned down again. Then they turned down. Now they declare that we don't conduct the OBC caste census. What is the reason behind it? Because they doesn't want to know the position of the backward classes. Because backward classes will be enlightened. Therefore, National Commission for Backward Classes also written a letter to the Ministry of Social Justice Empowerment. It is not the duty of the Ministry of Social Justice Empowerment, but it is for the Ministry of the Urban and the Rural Ministries to direct the conduct the caste census of the urban and the rural. Therefore, there should be a kind of consensus among the ministries, and a policy decision has to be taken by the Government of India to conduct. Because unless I don't know who guides them and whose advice they work it, but they don't, it doesn't appear they are working in the interest under the guise of only the superstitions, under the guise of the Rama, under guise of the some other issues, and the backward classes are diverted and they have been misguided and they are forgetting the fundamental rights and their unity. Therefore, we should not blame. With great respect, pardon me, Honorable Dr. Lakshmanji, because I can't keep quiet. I have to say my own this thing. So that you will also fight along with your government. And I love the Honorable Prime Minister, the way in which he has treated, and the 3 meetings he had conducted with me for the categorization and for the creamy layer issue. I have explained clearly in this explained that creamy layer issue. Look, if the both are the class 1 officers, then promoted after 40 years, their salary is 25 lakhs or 30 lakhs per year. Then you increase the creamy layer up to 30 lakhs. Why do you unnecessarily bring the elementary school teachers and small fellows under the creamy layer? So that is not the intendment of the Indrasani versus Union of India or the first expert committee recommendations. Salary income and agriculture income shall not be included. And the test is whether you are filling 27% or not is the test. For filling the 27%, you consider from the bottom level, then go up to the top level till 27% is filled up. Therefore, in that the direction, I hope and I trust and I request and I appeal the Dr. Lakshmanji and to see that the creamy layer issue is resolved and it should not lead to de-reservation of the 27% reservations. Then separate OBC ministry in the central government, because then what is the, we are under the SC. Always the ministry is headed by the SC. They are interested in the SCs and STs only, but not in OBC. Therefore, there should be a separate budget for the OBCs and separate ministry for the OBCs. Many of the states are having the BC welfare ministry, but not in the central. Then creamy layer I have already stated. Then I think Karnanidhi will cover the reservations in the promotion. And the Rohini Commission, with great respect, Rohini Commission, when the most respectable the demised the minister Arun Jaitley ji, he said they will categorize within 3 months. She was appointed for 3 months, then 6 months, then 6 months, now the 3rd year. Then without conducting the caste census, how she is going to then categorize, and what basis is, what is the legal basis for categorization? How does it? There will be hue and cry, even but you are collecting the data from the only the government departments, the employees and the other things. But how can you know that whether he is an educated man, whether not educated man, what is their population, what is their situation, what is the labor they undergo? Without this kind of the data, the categorization will be illegal, unreasonable, unconstitutional, and I have stated in my statement, 2-3 statement also, it's an atrocious. Then Rohini, then then Jyotiba Phule, then Jyotiba Phule is concerned. There cannot be any great social reformer. He is the father of the great social reformer. Therefore, the Bharat Ratna
should be given to Savitribai Phule and the Jyotiba Phule. And there are several other things. And that is the reason why, as an All India Backward Class Federation, I have founded that All India Backward Class Federation. I have made many demands. That is the conduct the caste census, establish separate ministry, then provision for the women reservations in proportion to their population, providing reservations in promotion to OBCs, implementation of the Rohini Commission shall be implemented only after conducting the caste census, then provide the political reservations for the most backward classes, because most backward classes, the real plight is much worse than the scheduled caste scheduled tribe. They doesn't have any food, shelter, or abode. Therefore, how does you get the equality? Government should provide a facility, a situation, an atmosphere, so that they can send their children to the school. Otherwise, then they will make use of their children for their livelihood only, for the begging, for wandering, for assistance only. Therefore, equality is a wider kind of sense. And apart from that, it is humanness, it should be there. We are human beings. We should have the mercy and compassion. Therefore, the most backward classes also, they deserve to be provided the political reservations. Reservation, then creamy layer issue has to be relooked. Then implement of reservations private sector. Now everything is being privatized now. Everything one after one. Then without providing reservations, then there was one commission report to provide reservations SC sustenance, that gentleman, farmer MP. But I have made a recommendation, a resolution has been passed. Why not? Why SCs, STs only? Backward classes also. Reservations has to be provided in private sector. First you make the law, then privatize. We don't have any objection. Then provide reservations in the judiciary and constitutional national judicial commission. Unless reservations are there, like in parliament, at the SCs, STs, today the courts are meant for the social justice. Unless our representatives are there, it is a representative system in the political, in the education, the employment, in the economic, in the industry, in the judiciary. There should be representatives from all caste communities. Then only justice will be done. Sitting in the Supreme Court, my brothers, they are against the reservations, against the constitution. They rewrite the constitution. They would like to end the constitution. If you say they conduct the caste census for promotion because there is no adequate representation, no, it is not our duty. Go and beg before the government and conduct the caste census. No, it is not our constitutional duty, and go there. And they strike down, but they don't give directions. Therefore, there should be reservations at least in the now the government can do it. At least at the there can be national commission like IAS, IPS. Only All India Judicial Commission can be there, providing reservations at the district level. At least some then scheduled caste, scheduled tribes, scheduled backward classes will be on 33%. There will be promotion to the High Court. 63 will be direct recruitment. At least some justice will be done. Then comes to then after Mandal Commission, every time either the Supreme Court judge or the Chief Justice or the judge used to head the National Commission. Now you appoint the National Commission with your own workmen, your own RSS and BJP workmen, who I don't say I don't blame them, but why do you dispense with to appoint a Chief Justice or judge as a chairman of the National Commission for backward classes? These SC commissions, ST commissions, backward classes, now full powers, constitutional powers have been given, but the teeth has been given, but you have made them to sit the teethless persons in the commissions. They don't do it. For example, when the Tina Dabi, then he stood All India first, the SC Commission could not do anything. I have written a letter to the government of India stating that, look, only some fees relaxations she got it, and she competed on par with others. She stood first. Therefore, open categories should be selected. But the All India first rank SC lady was given only in the SC reserved quota only. So that is the then relaxation of the promotions in the universities.
because BCs were there no reservations for the post of the associate professor or assistant professor for the BCs, and there are no vice chancellors. Therefore, I requested to relax 10 years experience for the as a professor, because 10 years experience as a professor only entitled for the appointment of the vice chancellor. But in so far the BCs are concerned, it should be relaxed. Then nationalization of school education to ensure the one education to all. Therefore, if education is entire India will change if you nationalize the education, and if you invest on the education, a similar education. In America also, at least in the community schools, there are very good education. Why not in India? I don't know why they don't concentrate. Therefore, I appreciate the Delhi and the Andhra Pradesh government are taking the more interest on the education and health is concerned. And the primary health, every human being want education and at least shelter and good health. Therefore, health, unless you provide the health at the free of the cost for the poor, then it will not be, it will be difficult. Then full rights to SC, STs on the Jal, Jungle and Jameen. Then inclusion of the nomadic castes in Haryana nomadic castes, they are very poor. They should be some of the nomadic castes will be included in the scheduled tribes list by conducting an inquiry. Distribution of the government unutilized land to the landless SCs, STs and OBCs. Benefits the OBCs on par with the SCs, STs. SCs are only OBCs are sufferers in the hands of the at the instance of the forward classes. They instigate the SCs, and 80% of the cases SCs, ST atrocity cases are against the OBCs only, because there is no protection. Therefore, some kind of the care should be taken. Then no, we are not against the 10% EWS. 10% EWS, you conduct a caste census, then survey it. What is the population of the below poverty line? You provide 50% reservations to them, because 54% OBCs you are providing 27. 10% EWS you are providing 10% reservations. What is this justice? What is this logic? Therefore, conduct the caste census. Then you find out what is the below poverty line. Then you provide 50% of the reservations like OBCs. We are not ever against the poor among the general classes. Then reservations for the SCs, STs, OBCs in the Gurukulas also, Gurukulas and in the Veda Pathshala also. Why not the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes can get educated? Why not they become the priests also? Why they can also be provided? And the objectionable writings in some scriptures. Then updating the reservation of the survey of the BPL level. Then abolish the caste varna vyavastha by these Phule principles. Then atrocities OBC. That's how I have made it. Ultimately, I've stated in my All India Backward Class Federation agenda. In the it is a time for the backward classes communities and their associations and the unions to unite under the one umbrella to fight for equality and the justice, and for achieving the primary goal of our share in our population to our people. Therefore, I am saying, meerento meekanta. What is your population? You take equal and par with SCs, STs. You cry, oh, SCs, STs, 10% reservations. Why Brahman, Banya, Kshatriya take 10% reservations take in proportion to their population? But they are taking our right only, the backward classes right only. Therefore, in education, employment, local bodies, legislature, parliament, and the judiciary, the vision of All India Backward Class Federation is building such a society where there is no discrimination in the name of the caste, rather to bring the casteless society, no discrimination between the poor, rich, and where everyone is assured of the equality and the social justice in all aspects. When there is no exploitation of a man by a man, no unemployment, and there is no fear
in the mind of losing job, bread, home, can be called the independence and the real sense. So this is the thing I have been. Therefore, one more thing I would like to say. Unfortunately, backward classes have been divided, and some unity is their caste. Even that unity also is not there in the caste. Therefore, whenever this unity is coming up, and the upper class people are seeing that the activists have been then influenced, and he is singled out, and he is being hit. Therefore, there more danger among the selfish backward classes from our community only. Therefore, my appeal to all the backward classes is there: don't work for the selfish, don't work for your self-survival, then have the commitment for the future generation and social justice, and for the better India, and for the peaceful, crimeless, and a casteless society. Thank you for giving me for one and all. My namaskar. Thank you so much, sir, for your inspirational word, sharing the vision and unknown story of Sanskarans. All of us start from zero. We take the right decision and become a hero. The same phrase can define himself of our next guest, Honorable Shri Rajendra Pal Gautam. I would like to call Advocate Ananta Gulakshe to introduce our chief guest. I'm going to introduce Honorable Rajendra Pal Gautam, is the Minister of Social Welfare, SC and ST Gurdwara Elections, Water and Registrar of Cooperative Societies. Mr. Gautam is an accomplished practicing lawyer and joining the Aam Aadmi Party in 2014. He was elected as an MLA from Simapuri constituency in the 2015 Delhi Legislative Assembly elections after winning by the margin of 48,821 votes. Within just 24 hours of taking charge as the minister, Gautam sir was applauded for his decision of I think he was disconnected. Yeah, Thakurji, could you please Yes, ma'am. take Yes, over? sir. Yes, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Yes, sir. Just a minute. Within just 24 hours of the taking charge as the minister, Gautam sir was applauded for his decision of widening the scope of developmental works that can be undertaken by MLAs using the SC/ST Welfare Fund. Now, I invite respected Gautam sir, please share your valuable views. Gautam sir. Yeah. Yeah, Sachin Bhaiya, can you check Gautam ji is on the webinar? If not, we can go to the next speaker and resume when Gautam ji is available. The Gautam ji is not there, we can go to Lakshman ji. Yeah, please go to the next speaker, Yeah. Thakre ji. Yes, ma'am. Yes, sir. For valuable words, if your action inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Our today's program chief guest, Honorable Dr. K. Lakshman, National President of Bharatiya Janata Party, OBC Morcha. I would like to call Dr. Anil Nachapalle to introduce our chief guest. Whether Dr. Lakshman ji is on the line. Anil sir, can you please unmute yourself? Yes. Hello. Jai Yes. OBC, all of you. Thanks, ma'am. I'm going to introduce Honorable Dr. K. Lakshman. Dr. K. Lakshman is currently
the national president for Bharatiya Janata Party's OBC Morcha since 26th September 2020. He was the former president of BJP in Telangana from 2016 to 2020. He formerly represented Mushirabad constituency twice as MLA from 1919 to 2004 in Andhra Pradesh Assembly and 2014 to 2018 in Telangana Legislative Assembly. In the year 2016, he was appointed as BJP Telangana State President. He was representing Mushirabad Assembly constituency as MLA till 2018. I request Honorable Dr. K. Lakshman sir, please come and share your valuable thoughts. I request you, please come, sir. Thank you everybody. Namaste. At the outset, I would like to thank Rashtriya OBC Mahasangh for giving me this opportunity to share my views on this auspicious Mahatma Jyotiba Phule Jayanti celebrations throughout the country. We all feel proud that he was the first person to be rewarded as Mahatma for his contribution towards social revolution. Not only he was a social reformer, he was a visionary, a great leader, fought against social evils like untouchability and discrimination for women. Though he got married at the early age, he thought that education is the only weapon who can revolutionize or socialize the society. So he made his life partner Savitri Bai to learn and educate her, and we really feel proud to note that she was the first lady teacher in the country, and it's an inspiration. And fortunately, of late, the celebrations of Mahatma Jyotiba Phule are taking place throughout the country. Earlier, it was only confined to Maharashtra and some parts of northern states. And even in states like Andhra Pradesh, Telangana, southern states also, now Mahatma Jyotiba has become popular, and even the educated lot among the OBC started celebrating his birth and death anniversaries and organizing lectures, celebrating and it's almost a festive mood. So on this occasion, this webinar is going to be definitely helpful to the OBCs. अभी जस्टिस ईश्वरैया जी ने काफी आपके सामने मुद्दे रखे थे. वो हमारे गाइड है, मेंटर है. मैं जब एमएलए था, काफी इश्यूज उनके पास मैं ले जाकर जिक्र कर रहा था असेंबली में. I was also a leader in the assembly. Though I was a party president or other responsibility I hold in the party, I used to speak more on this OBCs and SC issues in the assembly. पहली बार जब मैं एमएलए बना, तब मुझे मेरे नजर में एक डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था. हमारा जब इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का जब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा था, तभी तेलुगु देशम सरकार था, मैं एमएलए था. ब्यूरोक्रेसी इतना ओबीसीज के खिलाफ वो अपना जितना भी टैलेंट है वो बता देते थे. ये एमसेट एग्जाम्स काफी 4-5 साल हो गए, तब मुझे नजर में आया
जो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला ओपन कोटा भर्ती हो रहा ना, ओपन कोटा में जितने भी बीसीस थे उन सभी लोगों को बीसीस के कोटे में पूरा उसको डालते थे। मैं एमएलए के नाते जब बीसी कमीशन में भी मेंबर था तभी ये चीज मेरे नजर में आया। जब असेंबली में मुद्दा उठाया तो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे और काफी हमारे यनमला रामकृष्ण वो सब बीसी, देवेंद्र गौड़ बीसी के मिनिस्टर्स थे, उनको भी इट वाज सरप्राइज टू देम ऐसा कैसा हो रहा था। ओपन कोटा में जब मेरिट के हिसाब से जब ओपन कोटा में भर्ती हो रहा था तो 25% जो स्टेट के अंदर रिजर्वेशन था उसमें वो खाते में डालते थे। तो मैं जब असेंबली में मुद्दा उठाया, चीफ मिनिस्टर से कॉल पर किया, इसके ऊपर हंगामा हुआ। बाद में पता चला ये कुछ गलती हो गया, मगर अगली साल से उसको ठीक किया गया। लगभग 3 से लेकर 4,000 छात्र स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ। इस तरह काफी मुद्दे बीसीस के जब भी हमारे नजर में आते थे, जस्टिस ईश्वरैया जी मुझे गाइड करते थे, काफी ऐसे थे। और मैं देख रहा हूँ हमारे श्रीनिवास गौड़ भी हमारे वेबिनार के अंदर जुड़े हुए, वो भी काफी अपॉलिटिकल है, किसी राजनीति से जुड़े नहीं हुए, फिर भी नौजवान के नाते वो भी काफी मुद्दे पर हमारे प्रदेश के है, वो भी काफी उठाते रहते। हमारे कृष्णैया भी है, ये भी काफी सालों से इसके ऊपर लड़ रहे हैं। बट मुझे नया दायित्व जो दिया गया हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नड्डा जी मुझे बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष के बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर आपको ओबीसी का मोर्चा का संभालना पड़ेगा। तो इश्यूज के बारे में जानकारी है, मगर ये नया दायित्व था। तो मैं बोला ठीक है, ये मुझे बताया नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, ये नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम है कि जो 50% के ऊपर पॉपुलेशन देश भर के अंदर रहने के बावजूद भी अपना विंग जो है उसको मजबूत करना है, आपको ये दायित्व देना। ठीक है, अभी नया रोल मुझे प्ले करना पड़ा। जैसे बताया, लगभग ये 6 साल महीने के अंदर लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, फिर भी आज लगभग 10 प्रदेशों के अंदर ओबीसी मोर्चा का राष्ट्र स्तर पर प्रदेश कार्यकारिणी मैं खुद जाके अटेंड हुआ था और काफी परिवर्तन आ रहा। तो मैं दिल्ली बैठा जब जानकारी ले रहा था क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीज सरकार की ओर से हुआ, तभी मुझे पता चला मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब खुशी है, हमको सब गर्व से हम कहना पड़ेगा का एक अति पिछड़ा वर्ग के जो समाज के से आते हैं मोदी जी, वो प्रधानमंत्री बनना मामूली बात नहीं। ये 70 साल के आजादी के अंदर पहली बार अति पिछड़ा वर्ग से लेकर एक प्रधानमंत्री बनना, ये हम सब गर्व की बात है। जस्टिस ईश्वरैया जी बता रहे थे मिनिस्ट्री के बारे में, बैकवर्ड क्लास, अभी प्रधानमंत्री ही हमारा आदमी है, वो हम तो ये गर्व की बात है। जब काफी मिनिस्टर से मैं ऑफिशियल से मुलाकात करने के बाद थोड़े चीज जो ये 6.5 साल के अंदर मोदी जी सरकार ओबीसी के हित के लिए जो थोड़े अपनाया, मैं आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करता हूँ। पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय, जैसे जस्टिस ईश्वरैया ने बताया, संविधानिक दर्जा नेशनल ये बैकवर्ड क्लास कमीशन देना गर्व की बात है, क्योंकि इसके पहले भी था SC/ST कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, मगर नेशनल लेवल पर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, सिर्फ थोड़े कास्ट को जोड़ना, थोड़े कास्ट से बीसी से निकालना। मगर 27% जो आरक्षण दिया गया मंडल कमीशन के जरिया, वो ठीक से अमल हो रहा या नहीं हो रहा, उसका देखभाल करने का कुछ हमारे पास कुछ यार्डस्टिक नहीं था, कमीशन का उसका दखल अंदाज भी करने का मौका भी नहीं था। ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में जब ये मुद्दा आया पार्लियामेंट में 2017 लगभग में, वो भी पार्लियामेंट में पारित होने के लिए 2 साल लगा, क्योंकि राजनीतिक मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ओबीसी के मुद्दे के ऊपर जो लोग बोलते हैं और जब चुन के आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब मौका आता है, मगर किस तरह वो पार्लियामेंट में वो पेश करते हैं, आपको जानकारी नहीं चाहिए। लोकसभा में तो पारित हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए,
मगर हमारा पार्टी बीजेपी का जब हमारा स्ट्रेंथ नहीं था राज्यसभा में टुकरा दिया गया। काफी राजनीतिक दल उसके खिलाफ सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए 2 साल हमको वो रुकना पड़ा। बाद में वो राज्यसभा में हमारा जब स्ट्रेंथ आया, बाद में लोगों को समझाना पड़े, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला। जैसे अभी ईश्वरय जी बताए, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस आने से पहले 27% का रिजर्वेशंस, जब एजुकेशनली हो, एम्प्लॉयमेंट वाइज हो, कितना 8, 9, 10%, 11% हो रहा था। अभी ये कमीशन बनने के बाद पूरा देश भर में ये लोग मेंबर्स, चेयरमैन घूमने के बाद काफी इंस्टीट्यूशंस उसके ऊपर दबाव डाले। कई लोगों को सुमोटो दिल्ली बुलाया गया, अभी वो पारित हो रहा कि अभी लागू हो रहा। एंड I really feel proud to announce now this academic year is the first academic year after 73 years of independence that Kendriya Vidyalaya, Navodaya, Pathshala, the central education जो सिस्टम के नाते जो चलते हैं सैनिक स्कूल्स में और लॉ यूनिवर्सिटी में पहली बार 27% आरक्षण लागू किया जा रहा है। ये मुझे जानकारी परसों दिल्ली में बैठे जब मिला, और लगभग 60,000 to 70,000 students are getting benefited this academic year. You can imagine, as Mahatma Jyotiba Phule बताया, education is the only weapon who can uplift socially, economically, politically the so-called our OBCs. Now पहली बार मौका मिला लगभग 60 to 70,000। मैं जाके हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री को मिलकर धन्यवाद अर्पित करके राजनाथ सिंह को, बहुत खुशी की बात है सैनिक स्कूल में भी आज 27% आरक्षण दिया गया। वो राजनाथ सिंह जी मुझे बताया सिर्फ 27% ही नहीं, अभी देश भर में 33 सैनिक स्कूल्स है। मैं इस बार इस बजट में और 100 सैनिक स्कूल्स अलग मैं घोषित कर रहा हूं। जो स्टेट आज आगे आएगा उसको ये 100 सैनिक स्कूल भी देंगे। इसका मतलब मैं थोड़ा इसका अरिथमेटिक किया, लगभग 30,000 स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल में भर्ती होते, उसमें लगभग 5,000 स्टूडेंट्स आर गेटिंग OBCs are getting reservations in this 133 सैनिक schools। उसी तरह नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में ये आंकड़े देखकर तो मुझे भी ताज्जुब हो गया। They are all very fully equipped with all infrastructure and quality education with nominal fees। अभी कोरोना के वजह से आपको जानकारी होना चाहिए, हर प्राइवेट एजुकेशन जो है कॉर्पोरेट बन गया और इतना थवा हो गए पेरेंट्स, आपको आईपैड खरीदना, नहीं तो लैपटॉप खरीदना, ऑनलाइन सिस्टम में भारी पड़ गया। मगर ये जो है अभी ये सेंट्रली जो चल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अभी काफी नॉमिनल फीस पे, एंड वी आर आल्सो नाउ ट्राइंग टू वर्क आउट द रिजर्वेशंस इवन जुडिशियरी आल्सो। अब लॉ यूनिवर्सिटीज में भी लागू किया जा रहा है। इस तरह एक ऐतिहासिक निर्णय है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने से, और हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो भी लागू नहीं किया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट में, वो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में दिल्ली बुलाया जा रहा है, उसको अभी सुमोटो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। थोड़ा अभी सुधारा, अभी लगभग मेरे ख्याल से 18 से लेकर 20% तक अभी रिजर्वेशन लागू किया जा रहा है। और दूसरा जो ऐतिहासिक निर्णय कैटेगराइजेशन, अभी काफी वक्ता ने बोले नहीं, जब तक हमारे मेरे ख्याल से देयर आर ऑलमोस्ट नियरली 2600 अबव OBCs थ्रूआउट द कंट्री, जो राज्यों के प्रदेशों के ऊपर छोड़ो, ओबीसी जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है 2600 सम ऑड जो कैस्ट है, उसके अंदर आज तक भी नियरली मोर देन 1660 caste they have not got a reservation of 1% either in education or in employment। so this much of discrimination। हम जब बात कर रहे अनइक्वालिटी के बारे में, सोशल अनइक्वालिटी के बारे में, हमारे पिछड़े वर्ग के अंदर भी छोटे छोटे जातियां जो है उनको आज कम से कम पढ़ाई के लिए, आज बीसीस के अंदर भी जो सोशली अपलिफ्ट हुए, इकोनॉमिकली साउंड बन गए, अगर ये आरक्षण को उन्हीं के अंदर अगर ये 27% अगर घुमा दिए, बाकी ये 1600 ऐसे जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उनको छूटना ठीक नहीं। जैसे ईश्वरी जी बताए, कैटेगराइजेशन तो होना चाहिए, मगर उसके साथ जो डिमांड है कैस्ट बेस्ड सेंसस भी जरूरी है, हम भी मानते हैं, वो मांग तो जरूरी है। इट इज अ जेन्युइन डिमांड, आई एक्सेप्ट इट। मगर अभी जस्टिस रोहिणी जी कमीशन का बिठाने के बाद पूरा देश भर में वो घूम के आए, मैं भी उनसे बातचीत किया और दोबारा उनसे बात करने का मुझे
मैं अपॉइंटमेंट लिया और उसके बाद से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अभी अखबारों में आया 2%, 6%, 9%, 10%, ऐसा 27% को कैटेगराइज करेंगे। हमारा सिद्धांत भी जो अंत्योदय, हमारा जो फिलोसोफर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, द लीस्ट अमंग द लीस्ट, द लोएस्ट अमंग द लीस्ट, poorest among the poor should get first the fruits of this our independence। जो हमारे पंक्ति में जो आखिरी आदमी जो बैठता है उसको हमारा योग फल पहला मिलना चाहिए, यह हमारा सिद्धांत है। उसी आधार पर हमारा मोदी जी ने आज उसको अपनाकर अंत्योदय सिद्धांत अमल कर, इसलिए वो कैटेगराइजेशन जरूरी है। बीसीस के अंदर भी मैं बिहार गया, बंगाल गया, आपको जानकारी होना चाहिए बिहार के अंदर अभी बीसीस और ईबीसीस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के अंदर अंतर बढ़ गया है। दोनों के बीच में इतना जातिवाद हो गया कि ये हमारा जो भी आरक्षण मिल रहा है आप ही लोग 5-6 लोग पूरा आरक्षण ले जा रहे, ये नफरत बढ़ गया, ये तनाव बढ़ गया। इसलिए एक कैटेगराइजेशन तो जरूरी है, पर कैटेगराइजेशन के लिए आप जैसे बोले कैस्ट बेस्ड सेंसस भी जरूरी है। अब 70 इयर्स के अंदर कोई ये कैस्ट बेस्ड रिजर्वेशन सेंसस जिक्र नहीं हुआ, मगर मांग तो है, अभी उसके बारे में जरूर उसका जिक्र तो होना चाहिए। और बाकी अभी जो है अभी फिशरीज के लिए भी एक अलग जो मिनिस्ट्री बनाया गया, क्योंकि हमारा सी कोस्ट इतना बड़ा है, जो समुद्र के आधार पर जो जीवन चलाते हैं और मछुआर है उनके लिए अलग भी मिनिस्ट्री बना है, वो भी काफी बजट अलग भी है। मगर इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जब से अपने आजादी आया पहला प्राइम मिनिस्टर हमारा नेहरू जी ने जो ओबीसी के हित के लिए काका खलेकर कमीशन को बिठाया, मगर वो जितने भी सिफारिश किए, रिकमेंडेशन किए काका खलेकर कमीशन, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कोई भी उसका अमल किया नहीं। जब भी था मांग था बैकवर्ड क्लास कमीशन का दर्जा होना चाहिए और रिजर्वेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, मगर फिर बाद में वीपी सिंह जब बन गया 27% का लागू, ये इसका थोड़ा जानकारी मैं लिया हूँ। और क्रीमी लेयर का भी जिक्र हो रहा, 6 लाख से 8 लाख बढ़ाया, और उसका भी बढ़ाने के लिए जो चर्चा चल रही उसके भी जरूर चर्चा तो होना चाहिए। मगर इतना तो हमारे ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जितने भी मांग है, जब तक अनलेस अंटिल वी आर यूनाइटेड, we fight together irrespective of caste under the umbrella of OBCs, no political party or no government can yield to our pressures unless until you become a force, a pressure group or a vote bank. Any political party as a politician in a democracy, you know the majority is the opinion. जब तक हम क्षेत्र स्तर पर इसके बारे में हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ मांग करते हैं कागज पर, वो मुमकिन बात नहीं है। क्योंकि मेरे अंदाज से मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बाहर तो बोलते मगर जब पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर आता रवैया बदल देते हैं। मगर सरकार को भी आपको सोचना पड़ेगा, जब हम सरकार में रहते हैं कितना बोझ उठाना पड़ेगा जब हमको समर्थन नहीं मिलता। जब क्षेत्र स्थाई पर अगर हम इसका एक आंदोलन नहीं करते, तो या रिजर्वेशन इन either in assemblies or parliament और या बाकी जो भी डिमांड है, उतना आसानी नहीं है कोई भी सरकार को। इसलिए हम एकजुट होना चाहिए, एक संगठित होना चाहिए, एंड वी शुड बिकम एन फोर्स, ए प्रेशर ग्रुप एंड फाइनली ए वोट बैंक। अनलेस अंटिल यू बिकम एन वोट बैंक, नो पार्टी विल यील्ड टू योर प्रेशर्स। जहां वोट है सही ढंग से पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा। अगर ये हम काम को अगर अपनाएंगे नहीं, तो हमको लोगों के मदद मिलेगा नहीं, ये भावना हमको लेना चाहिए। इसलिए आज मैं एक जस्टिस शिजवाया जी है, हमारे श्रीनिवास गौड़ मेरे साथ थे। मैं जिस प्रदेश अभी पहले आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का सीलिंग कैपिंग जो होगा 50% का, सबसे पहला कौन नुकसान हो रहा है आज बीसी हमारे प्रदेश में। पिछले सरकार जो 34% लोकल बॉडी से रिजर्वेशन था, पंचायत था, जिला परिषद था, अभी क्या हो गया 34%। जब कैपिंग हो गया 50% का, तुरंत एससी का कुछ नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, एसटी का कुछ नहीं कर सकते, तो 50% क्रॉस हो गया। क्या करना, बीसी का घटाओ,
20 का 34% से लेकर राजू को होगा 18%, 20%, 24% हो गया हमारा, चाहे तेलंगाना में भी हो, आंध्र प्रदेश में भी हो। मगर हुआ क्या, सिर्फ हम उसको खिलाफ बोल सके, ना लड़ सके। मगर आज जो सरकार में है, अब 20 सिर्फ बोलेंगे उससे कुछ होएगा नहीं। अभी 34 से लेकर मांग तो 50% का है, मगर 50% छोड़कर आज 18%, 20% से सरपंच बनना, गांव का मुखिया बनना, जिला परिषद बनना, समिति प्रेसिडेंट बनना, वही अगर आप काट दिए तो क्या होगा हाल। इसलिए जब तो मांग तो बहुत है, तब तक हम क्षेत्र स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ते, ऐसी तो चीज होते जाएगा। इसलिए मैं हमारे यहाँ भी प्रदेश में एक सर्वे हुआ, समग्र कुटुंब सर्वे, तो हर जाति का सर्वे हो गया, मगर गवर्नमेंट सरकार पब्लिश नहीं करती। पब्लिश इसलिए नहीं करते कि जानकारी है उनको। 54% बीसी पॉपुलेशन है हमारे प्रदेश में और 10% एसटी का है, 16% एससी का है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 80-90% वीकर सेक्शन है। मगर राज्य ये सेक्शंस का नहीं चलता है, चाहे 2%, 3% वाले हुकूमत उनका हो जाता है। इसीलिए कि वी आर नॉट यूनाइटेड, वी आर नॉट कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। इसलिए ये जो सर्वे भी जो होता है, अगर आंकड़े अगर बाहर आते तो उसमें जानकारी होता है। इसीलिए अवेयरनेस तो अभी बढ़ गया, क्योंकि अभी अभी नौजवान छात्र आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नाउ दे हैव बिकम लिटरेट। इसलिए कुछ मुद्दे पर आके लड़ना शुरू किया, मगर ये इतना से नहीं होगा। आने वाले दिनों में ऐसे आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जैसे जस्टिस ईश्वर चला, ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशंस एकजुट होकर हमारे हक के लिए लड़ना जरूरी है। और जो भी मांग है जरूर हमारा सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है, जरूर मेरे ओबीसी मोर्चा के नाते हम, जब हमारा पार्टी जो सरकार में है, जरूर हम ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। मगर जब तक क्षेत्र स्तर पर ये मुद्दों पर ये एक आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, उतना आसानी की बात नहीं। यही मुझे जो 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला और मौका दिया गया। मैं आने वाले दिनों में भी आप सब लोगों से मैं ये वेबिनार के नाते हो और फिजिकल, जब कोरोना के बाद फिजिकल जो गैदरिंग्स हो, मीटिंग्स हो, जरूर मैं हिस्सा लूंगा। हमारे गाइड है, फिलोसोफर है, मेंटर है ईश्वर जी, काफी वो भी कमिटेड है इस सेक्शंस के लिए, बहुत तड़पते रहते हैं। और काफी लोग हैं हमारे इसमें साउथ इंडिया में भी। ये मुद्दे को लेकर हमको लोगों में और इसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबके साथ हूँ जरूर। और मैं तो इतना तो समझता हूँ कि पहली बार एक अति पिछले वर्ग का प्रधानमंत्री बन सके, और 6 साल के अंदर जो 70 साल के अंदर जो मुद्दे थे, सिर्फ मांग थे, आज मांग को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो, कैटेगराइजेशन हो, क्रीमी लेयर के बारे में हो, पीएसयू का जो अंडरटेक्स के अंदर जो आज है उनके बच्चों को रिजर्वेशन हो, और ये पूरा अभी थोड़े थोड़े चीज अभी आगे आ रहे हैं और बहुत ही कुछ लंबा है हमारा रास्ता। जरूर उसको वो जर्नी में आपके साथ हम भी है। मैं ये मुझे मौका दिया गया महात्मा ज्योतिराव फुले के, और मेरा अपील है, जब तक ज्योतिराव फुले जी का स्टैच्यूज हर कोने पर, हर गांव पर जब तक नहीं पहुंचेंगे, वहां के नौजवान इसका इंस्पिरेशन नहीं बनेगा, वो प्रेरणा नहीं मिलेगा। ये भी हमको सोचना पड़ेगा। हर गांव को हमारे ज्योतिराव फुले जी का विग्रह और स्टैच्यू को लेने का जिम्मेदारी भी हमको लेना चाहिए। इस 2 शब्द के साथ मुझे मौका दिया गया, मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद अर्पित करते हुए विदा लेता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable words and very much informative information. Now I hand over to Mrs. Varsha Vaidya. Just for a minute before Varsha ji, so let me thank Dr. Lakshman for his time and joining us today. We are ever grateful. I think it's very important that one of you were able to get appointed as the national chairman for the OBC through BJP government. It's wonderful. So we would like to present you some of these issues that we've been talking about today, so that at the end of this national conference, we will be passing resolutions on 7 items, sir. Conducting caste-wise census, separate ministry for OBC at the central government, remove creamy layer, reservation in proportion to OBC employees, and Rohini Commission, separate constituencies of OBC in Lok Sabha and Vidhan Sabha, and Bharat Ratna to Mahatma, Jyotiba, Phule, and Savitribai Phule. So we will be passing these resolutions through you.
we will be submitting to the government of India, and hopefully the Prime Minister, and with your involvement in this, we will make a progress. And you rightly said, we have to get united. Only way we can accomplish the OBC issues at the national level and at the states levels. And we are very proud to see you that you are leading this effort at the national level through the BJP government. And we are ever grateful today for joining us in this national convention on the auspicious occasion of Mahatma Jyotiba Phule's 194th birth anniversary. Thank you so much, sir. I will also add one more thing. जो जितने भी ओबीसी मोर्चा का अपने नेशनल प्रेसिडेंट बने, किसी का जमाने में कुछ नहीं हुआ, हमारे डॉक्टर लक्ष्मण साहब के जमाने और उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। Thank you, sir. Now I request Aboli to introduce Honorable Rajkumar Saini, ex-MP of Haryana. Thank you so much, ma'am. Honorable Rajkumar Saini. He was the MP of Kurukshetra, Haryana. In 2014, he became a member of 16th Lok Sabha by defending 2 times MP from India National Congress, Naveen Jindal from 1997 to 1999. He took a charge of the State Minister, Printing, Stationery and Transport. Saini sir launched a campaigning to educate the drivers of trucks and buses, which were highly appreciated by the government. In 2000, he was made Minister of State Sports and Transport while playing the State Minister. He campaigning for the promotions of state levels players and made so many stadiums to encourage them. I welcome Honorable Rajkumar sir on the behalf of Rashtriya OBC Mahasangh, and I request sir to please address us in 2 minutes. Thank you. I think Rajkumar sir, okay sir is there. Yeah. जी मैम, मैं आपकी पूरी आवाज नहीं मेरे पास आई कि आपने मेरे से क्या पूछा और किस डिबेट में मेरे को इन्वॉल्व किया है, जरा रिपीट अगेन। थैंक यू सर। सर मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है, इफ यू वांट आई विल रिपीट इट। आवाज जरा ऊंची रखेंगे तो मेरे को सुनाई देगा थोड़ा। Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, you are. Sir, Rashi has just introduced you. Now the floor is yours to deliver your address, sir. जी थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं आज हमारे इस दलित शोषित पिछड़े समाज को जो रास्ता दिखाने वाले महापुरुष युग पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी आज जयंती है, मैं उनको नमन करते हुए पूरे देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि कम से कम हमारे उस महापुरुष को, जिसको लोग जातियों में बांध देते हैं महापुरुषों को, इस दलित शोषित समाज को दिशा देने के लिए बहुत सारे महापुरुष हमारे रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और भीमराव अम्बेडकर जी और उन सब में विशेषतम स्थान रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी, इन सब लोगों ने अपने अपने काल में अपनी अपनी वाणी से इस सुदृढ़ समाज, जिसको आज दलित और ओबीसी के नाम से जाना जा रहा है, इसको रास्ता दिखाने का काम किया है। जिन लोगों ने इस समाज को रास्ता भटकाया है, अंधविश्वास में धकेला है, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, इनको महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोल करके अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा करके नारी जगत को शिक्षा देने का काम किया और हमारे इस शोषित समाज को दिशा देने का काम किया। उनके आधार पर ही हमारे एक युग पुरुष भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान का निर्माण किया। संविधान को लिखा इतनी विशालतम हृदय से भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनकी 14 तारीख को जन्म तिथि है, उसको जो है हम एडवांस में नमन कर रहे हैं
कि उन्होंने अपने बेबाकी से जिस प्रकार से संविधान के अंदर कमजोर तबके के हितों को सुरक्षित रखते हुए संविधान लिखा था, लेकिन वो संविधान एक किताब समझ करके अलमारी में बंद कर दी गई है। कहने के लिए आरक्षण है, लेकिन आरक्षण की अगर परिभाषा हम आज देश के अंदर देखना चाहते हैं वो तस्वीर, तो ये खेल गजब है। एक न्यूज चैनल आज तक के ऊपर वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक बैकवर्ड क्लासेस का एक भी जज नहीं है। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें वाइस चांसलर तो दूर की बात है, वाइस चांसलर तो कोई है ही नहीं, लेकिन प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर वहां तक भी हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको प्रमोट नहीं किया गया, जो सिर्फ 8-10% है। 52% लोगों की जगह सिर्फ 8-10% है। हमारे देश में अनेकों रेजिमेंटें हैं मिलिट्री के अंदर, वहां पर कोई एससीबीसी के नाम की कोई रेजिमेंट नहीं है। देश से अनेकों राजदूत बाहर से देशों में जाते हैं, हमारे ओबीसी में से कोई राजदूत अभी तक नहीं भेजा गया। यहां तक कि ओबीसी ने 90% वोट मोदी जी को ओबीसी का नेता समझते हुए दिया, लेकिन वो बनावटी नेता के तौर पे अपनी जाति को 2 साल पहले उन्होंने बैकवर्ड में शामिल करके अपना मुखौटा ओबीसी का लगाया। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो अभी तक कम से कम प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पद हिंदुस्तान के अंदर किसी व्यक्ति के पास नहीं है। वो ओबीसी की जो इतनी दयनीय हालत है कि कहीं भी प्रशासन में इनको जगह नहीं मिली, तो माता सावित्रीबाई फुले उनके नाम पर किसी स्कूल के अंदर कोई तस्वीर नहीं, उनका कोई सिलेबस पढ़ाया नहीं गया। सरस्वती और लक्ष्मी के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, ना कि ये पता ये किसकी बेटियां हैं, कहाँ इन्होंने जन्म लिया है। जिस माता सावित्रीबाई फुले ने इस नारी जगत को शिक्षा दी, उसका सिलेबस में तो क्या उसकी कहीं फोटो भी किसी स्कूल में नहीं लग सकी। महात्मा ज्योतिबा फुले को अभी तक भारत रत्न तो क्या देना था, हमारे देश के सिलेबस में कहीं उनका आंकलन नहीं आया, जिन लोगों ने इस देश के कमजोर तबकों के उत्थान के लिए। लेकिन विषय यहां तक ही नहीं है, विषय की गंभीरता इतनी ज्यादा सीरियस है कि हमारे देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का व्याख्यान और पाखंड विश्वास के माध्यम से देश के हमारे कमजोर तबके के लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके कि अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, माड़े कर्म करेंगे नरक में चले जाओगे। अपना ये जन्म तो शुद्ध हो या ना हो, अगले जन्म की फिक्र लेकर के लोग पत्थरों के आगे मत्थे बढ़वाते फिर रहे हैं, जिसका बहुत पुरजोर हमारे सभी संतों महापुरुषों ने पुरजोर खंडन किया। इस मूर्ति पूजा का जो हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, हमारे जो है ना कबीरदास ने बार बार कहा, पोथी पढ़ जे होया हीरा नी मन का फेर, अरे तन की मालाएं फेंक मन का फेर, पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जिसका पिस्सा खाए संसार। ये व्यथा है हमारे देश में स्वर्ग और नरक। अगर हम इस बात की परिभाषा को जनता के सामने, स्वर्ग और नरक क्या है, स्वर्ग तो इसी धरती पे हो सकता है अगर कोई आदमी अच्छे कार्य करता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने, मदर टेरेसा ने, रविदास जी ने, हमारे कबीरदास जी ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, तेग बहादुर जी ने अच्छे कार्य करे, वो भगवान स्वरूप हमारे महापुरुष हैं। लेकिन लोगों ने काल्पनिक कहानियां घड़ के जैसे फिल्मों में दिखाई जाती हैं, फिल्में जैसे ऐसे सीन क्रिएट कर दिए जाते हैं कि बैठे बैठे व्यक्ति को रुला सकती हैं, हंसा सकती हैं, जिसमें ऊपर लाइन में सीधा लिखा होता है कि ये फिल्म काल्पनिक है, उसके बाद भी हमारे दिमाग के ऊपर इतना गहरा प्रभाव छोड़ती है। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के पश्चात इस देश के अंदर इतना विकराल रूप नंदवंश में अखंड भारत के वाले चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट ने, उनको हम याद नहीं करते। हमारा याद पुण्य और पाप को लेकर के, अरे व्यक्ति
संसार में यही 4 फुट पानी खड़ा कर दो, 10 दिन उसे छेड़ो ना, बैक्टीरिया पैदा होगा, मछलियां पैदा हो जाएंगी, कॉकरोच पैदा हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, उसमें मगरमच्छ हो जाएंगे, अनेकों वनस्पति उसके आले दुआले खड़ी हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में बताया जा रहा है कि ये विद्या जो है ये तो मनुस्मृति के माध्यम से सृष्टि रची, मनुस्मृति के माध्यम से सृष्टि रची। अरे सृष्टि तो सूर्य से टुकड़ा अलग हुआ, उसमें ठंडा हुआ, पानी आया, वनस्पति आए, जीव जंतु पैदा हुए, डायनासोर तक प्रजातियां गई, उन्हीं में एक आदि मानव पैदा हुआ जो हजारों लाखों साल में विकसित होने में बालों वाला, पूंछ वाला, उसने पत्थर से आग जलानी सीखी, फिर मांस कच्चा खाता था, भून के खाने लगा, गुफाओं से निकल कर कुटिया बनाई, पत्ते छाल के पत्तों से तन ढकता था, फिर उसने रेशम के कीड़े से वो बनाना शुरू किया, अपनी जुबान को लिखने के लिए शिलालेख लिखे। 3800 साल पहले पेपर का और लोहे का आविष्कार हुआ, तब उसके पश्चात कहीं जाकर के जो पढ़े लिखे लोग, आर्यन सभ्यता हमारे देश में आई, ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी जो कि कल्पना से परे हैं। ढोल शूद्र पशु और नारी सकल धारणा के अधिकारी के ढोल को जैसे पीट के काम लिया जा सकता है, इसी प्रकार से शूद्र नारी और पशु को भी पीट के काम लिया जा सकता है। अगर शूद्र पड़ेगा तो तूफान, आंधियां, काल और बीमारियां और प्रलय हो जाएगी। ये सब को शुद्ध दिखाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरा प्रचंड रूप से जब काम किया, जनता को, इस शोषित समाज को जब उन्होंने दिशा दी कि तुम्हारे पढ़ने से कोई तूफान या प्रलय नहीं आएगी, उन्होंने स्कूल खोले, जनता को जगाने का प्रयास किया, ना आंधी आई ना तूफान आया, लोगों को समझाया कि एक औरत के पति मर जाने से उसको जिंदा जलाया जा रहा है, कितना अमानवीय है। अंग्रेजों से कानून बना के उसे बंद कराया। हमारी छोटे छोटे बच्चों की शादियां जब होती थी, उनको शादियों का प्रचलन इस वजह से हुआ कि हमें शूद्र समाज के लोगों को जब लगभग 3-2 हफ्ते मंदिर में, लगभग 3-2 हफ्ते मंदिर में शुद्धिकरण, तो वो प्रचलन हुआ कि हमारे बच्चे पर किसी गंदे पड़े, तो इस वजह हुआ कि हमारे बच्चे पर किसी गंदे पड़े, इस वजह व्यवस्था को ठीक करने के लिए ही छुआछूत को दूर करने का पूरा प्रयास किया कि अगर छोटे तबके के आदमी ने, देखिए क्या है ना, छोटे तबके के व्यक्ति ने अगर ऊपरले समाज को पानी पिला दिया तो जहर चढ़ गया, अगर उसकी बहन बेटी टकर गई तो लोग उसका थूक भी चाट गए, तब जहर नहीं चढ़ा। इन सब बातों की कुरीतियों को महात्मा ज्योतिबा फूले ने बाखूबी व्याख्यान करके जनता के सामने रखा, और उसी समानता आधारित विचारधारा पर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। लेकिन ये संविधान सिर्फ किताब पढ़ के रह गया। इसे लागू करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दिन और रात यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह हम अपने समाज के उन लोगों को जगाने में लगे हुए हैं जिन लोगों को अंधविश्वास और पाखंड के अंदर धकेल दिया गया है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ना ये रूह है कहीं ऊपर स्वर्ग में, आसमान में स्वर्ग है। अरे किसी घर में कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, भाईचारा है, घर में मेल मिलाप है, समाज में इज्जत है, लेन देन सही है, तो वो घर स्वर्ग है। अगर किसी घर में क्लेश है, 24 घंटे बच्चों में, बीवी में, भाइयों में और मुकदमे और बीमारियां पड़ी हुई हैं, वो नरक है। लेकिन लोग सोचते हैं कि कहीं स्वर्ग और नरक ऊपर है। मित्रों, ना इंसान ऊपर से कहीं दुनिया में आया, ना ऊपर कहीं जाता है। मैं सिर्फ इस बात की एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि मैं 68 साल का हो गया हूं। 68 साल पहले कहाँ था? मैं अपनी माता के गर्भ में था। माता के गर्भ में कहाँ से आया? मेरे पिता के मिलन से आया। मेरे पिता के पास में कहाँ से आया? उसके खून से शुक्राणु बने। वो खून कहाँ से आया? जो उन्होंने डाइट खाई। वो डाइट कहाँ से आई? जो पेड़ पौधे जमीन में पैदा हुए, पानी के, मिट्टी के और हवा के और अग्नि के संपर्क में आए, तो उससे वनस्पति पैदा हुई। वो मेरे पिता ने अनाज के दूध के रूप में खाई, उससे उनका खून बना, खून से शुक्राणु बने, शुक्राणु मेरी माता के साथ अटैच हुए, वहां मैं गर्भ में पनपा, मेरी उत्पत्ति हुई। और जिस दिन मैं मरूंगा, ये हवा हवा में मिल जाएगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, किसी ने दफना दिया है, जला दिया, तो मिट्टी मिट्टी मिल गई, पानी पानी में मिल गया। मैं ना कहीं से आया, ना मैं कहीं गया, यहीं पैदा हुआ था और यहीं खत्म हो गया। हम जब देश आजाद हुआ तो 23 करोड़ थे, अब हम 140 करोड़ हैं।
कोई 117 करोड़ लोग ऊपर भगवान ने बैठा तो रखे नहीं थे। जैसे ही मैथुन से ये सृष्टि, हम बीज डालते हैं, एक बीज से अनेकों बीज पैदा होते हैं, इसी प्रकार से एक परिवार से अनेकों परिवार बनते जा रहे हैं। इसी तरह कहीं अगर आप खाना झूठा डाल देंगे तो 4 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आप 4 दिन नहाएंगे नहीं तो आपके कपड़ों में जुएं पड़ जाती हैं। वो कोई बीज डालते थोड़ी हैं। जब 4 चीजों का मिश्रण यहाँ दुनिया में होता है, अग्नि का, पानी का, जब 4 तत्व का पुतला जीव को बोला गया है कि जब अग्नि पानी आपस में वायु और मिट्टी जब मिलेंगे तो ये उत्पत्ति होगी। लेकिन स्वर्ग और नरक के भय, अंधविश्वास फैला करके इस देश के गरीब तबके के लोगों के दिलों में इतना भय बैठा रखा है, जिसको हम ये कह सकते हैं इस देश की तरक्की में अगर कोई बाधा है तो यहाँ भगवान की कल्पना लोग किसी मानस में बोल देते हैं, ये विष्णु भगवान है, ये भोला भगवान है, ये राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। मित्रों, भगवान तो ये महापुरुष हुए जिन लोगों ने समाज को दिशा दी और जिनका इतिहास है। जो इतिहास हमारे पास है ही नहीं। बोलते हैं कि 4 पहले स्वर्ग था, स्वर्ग में जो है ना हमारे सतयुगी लोग, सतयुग था, फिर द्वापर आया, त्रेता आया, तो ये शास्त्र स्वर्ग में लिखे गए। जब स्वर्ग में ये कहा गया कि हिंदुस्तान में जब भी अधर्म बढ़ेगा तो प्रलय हो जाएगी। स्वर्ग में एक बार सतयुग में प्रलय हुई, फिर द्वापर में प्रलय हुई, फिर त्रेता में प्रलय हुई। जब जब अधर्म बढ़ा तो प्रलय बताई गई है शास्त्रों में। तो अगर ये प्रलय होती गई, पेड़ पौधे सारी जमीन मिट्टी में, पानी में जलमग्न हो गई, तो फिर ये शास्त्र कौन बचा रहा था? जबकि कागज ही 4,000 साल पहले बना, उससे पहले शास्त्र लिख किसने दिए? लोहे का निर्माण ही 3800 साल पहले हुआ, तो ये तीर भाले और तलवारें महाभारत में, रामायण में कहां से आ गई? ये सब काल्पनिक कहानियां जिसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 दिसंबर 1976 को ये स्पष्ट लिखा गया कि हमारे ये महाकाव्य हैं, इनके हम आस्तिक हैं, ये हमारी श्रद्धा के। So looks like we have a problem with the connectivity for Dr. Rajkumar ji. तो मित्रों, मैं अभी इस लिंक के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जमीन जैसे पैदावार नहीं देती, उबड़ खाबड़ रोड रास्ता गति नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से इस देश के राष्ट्र निर्माण में अगर कोई बाधा, ये ऊंच नीच धर्म अधर्म की जो बातें हैं, मोहम्मद गजनवी आए यहाँ पर, गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, सिकंदर आया, बाबर आया, यहूदी आए, हूण आए, आर्यन आए, हर एक ने यहाँ की मूल निवासी सभ्यता को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के साथ साथ हमारे लोगों को खरीदा और बेचा गया। मुंह के आगे हांडी, पीछे झाड़ बांधे गए। इसको छुड़वाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरा भरसक प्रयास किया। हमें तो तालाबों में जहां पशु पानी पीते हैं वहां भी पानी पीने का हक नहीं था। यहाँ 4 वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के तौर पर जो ब्राह्मण शिक्षा देगा, लेगा, संपत्ति रखेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, बढ़िया पोषक के तौर पर जो है ना बिजनेस करेगा, और ये शूद्र संपत्ति नहीं रखेंगे, कहीं जो है ना इनको शिक्षा दी नहीं जाएगी। इस सारी व्यवस्था के अंदर शूद्र को गुलाम बना करके इस्तेमाल किया गया। जो हमारे से सेवा ली गई, अगर मैंने कपड़े धो दिए तो मैं धोबी बन गया, मैंने कपड़े सील दिए तो दर्जी बन गया, जूती बना दी तो मोची बन गया, सेब साग सब्जी उगा दी तो माली बन गया, भेड़ बकरी चरा दी तो ग्वाला बन गया, अगर हमने मिट्टी के बर्तन बना दिए कुम्हार बन गया, लोहे का कहीं औजार बना दिया लोहार बन गया। इस तरह से 6743 जातियों में बांट करके आज हमारा जो शोषण हो रहा है, इसके हम खुद के जिम्मेवार हैं। कहने के नाम पे आरक्षण है, आरक्षण कहीं ओबीसी को अभी 8 या 10% की एवरेज में हम विभिन्न विभागों के अंदर पहुंच सके हैं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे लोगों के साथ जद्दोजहद करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई जोटा या सांड मारने के लिए आए या कुत्ता कोई काटने के लिए आए तो हम बट्टा भगा करके मारते हैं, बट्टा भगा के मारते हैं, क्योंकि कल्ला जानवर वो डर जाता है।
अगर वही बट्टा हम कहीं मधुमक्खियों के छत्ते में फेंक दें तो पूरे एरिया को पाड़ के खा जाती हैं कि आपने बट्टा कैसे, क्योंकि वो इकट्ठी हैं। मेरी आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, बाहर देशों में हमारे बच्चे इसलिए जाते हैं, वहां काम करने वाले को पैसे मिलते हैं। हमारे देश के अंदर सारे राजनीतिक दल और सारे नेता किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे भाषण देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है, ये दलित और जो मजदूर है यही राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, आपके मेज कुर्सी बना रहे हैं, आपके कपड़े धो रहे हैं, आपकी गली सफाई कर रहे हैं, आपका मेला धो रहे हैं। हम सारे राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, लेकिन जो झूठ बोल करके इस मंदिर मस्जिद के तांडव में हमारे इस कमजोर तबके को उलझा रखा है, मैं उन सब भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर मंदिरों से कुछ मिलता तो ये बाबा योगीनाथ जी, मोदी नाथ जी, चांदनाथ जी, आदित्यनाथ जी, ये सारे लोग मठ और मंदिर छोड़ करके पार्लियामेंट में ना जाते, क्योंकि आजादी से पहले हमें मंदिरों में चढ़ने दिया और अब सारे मंदिर के जितने भी ठेके हैं वो सारे हमारे दलित और पिछड़े समाज को थमा दिए हैं। कावड़ा ढोने का रामलीला, हम वहीं आएंगे, मंदिर बनाएंगे, ईंटा पकड़ाएंगे, सीमेंट चढ़ाएंगे, लेकिन कमेटी में एक भी मेंबर हमारा नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था के हम शिकार, तब भी मंदिर बनाए जा रहे थे, आज भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। वक्त का हमारा ये समाज, इसका अस्तित्व राजनीतिक तौर पे जीरो है, प्रशासनिक तौर पे जीरो है, न्यायिक तौर पे जीरो है, मीडिया के तौर पे जीरो है। जब तक हम अपने अस्तित्व को मधुमक्खियों के छत्ते की तरह इकट्ठे होकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उन लोगों के भरोसा मत रहना जो इन पार्टियों के टिकट लेके आते हैं। पार्टियां टिकट किसी भी समाज की किसी क्षेत्र में जब संख्या ज्यादा होती है, वहां एक टिकट दे करके हमारा एक कबूतर उतारती हैं, और जहां कश्यप ज्यादा होंगे कश्यप को भेजा जाएगा, सैनी ज्यादा होंगे सैनी भेजा जाएगा, कुम्हार। I think you should unmute yourself, sir. Please unmute. I think it might have been muted. Sir, next ले लें? Oh, he left the meeting. I'm admitting him again. He is joining again. Now I request Honorable Rajendra Pal Gautam sir. एक मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ, एक मिनट। तो हमारे उन लोगों को टिकट दे करके वहां भेज दिया जाता है, और जब वो लोग वहां से वोट उनको मिल जाते हैं, समाज के टिकट उनके बलबूते मिली है, वोट उनके बलबूते मिले, लेकिन उनको फिर उन पार्टियों की गाइडलाइन के बाहर वो उन समाज के लोगों के पैरवाई नहीं कर सकते उनके हितों की। पूरा हरियाणा जलने के बाद भी 250 एमपी पार्लियामेंट में बैठे थे, एक भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस समाज के लोगों को अपने आप खुद जागृत होकर राजनीति में, शासन में, प्रशासन में खुद आना होगा। इतना ही मैं कहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले को मैं फिर प्रणाम करता हूं कि जिनकी आज जयंती है। नमस्कार। Thank you, sir, for your valuable message. Now I request Honorable Rajendra Pal Gautam, Minister of Delhi, to deliver a message very shortly. Please. जय भीम सबको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपको मुझे इस जूम मीटिंग में बुलाने के लिए। मेरा टाइम 7:15 से 7:30 दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्ताओं का वक्तव्य लंबा होता गया और वो नहीं हो पाया। ये अच्छा मौका है कि कोरोना काल में हम लोग कम से कम जूम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूं, उनकी जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पूरे देश के बहुजनों को, मूल निवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा।
और साथ ही साथ जो अभी राजकुमार सैनी जी बोल रहे थे, क्योंकि वो उसी तरह के सारे विचार मैं भी हर जगह रखता हूँ, और मैं उन्हीं विचारों को रिपीट करने की बजाय मैं उन विचारों से अपनी सहमति दर्ज करते हुए एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ कि ये तो सच है कि हम सबको एक गलत तरीके से पढ़ाया गया और हमारे हक अधिकार छीने गए। हमारे पढ़ने लिखने पर बंदिश लगातार लगभग 4000 साल तक लगा के रखी गई। व्यापार करने पर बंदिश लगा के रखी गई। संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश लगा के रखी गई। लेकिन हम अगर आज की परिस्थिति में बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का लगभग भगवाकरण हो चुका है। आज हम उन जजमेंट्स को जब पढ़ते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, तो उनमें कई जजेज ऐसे हैं जिनके जजमेंट को पढ़ के न्याय नजर नहीं आता, उसमें अन्याय नजर आता है। और दूसरी तरफ जिस तरह जातियों में इस देश के तमाम बहुजन समाज को बांट के रखा गया, अगर हम टुकड़ों में अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं पाएंगे। हम लोग 85% की 88% की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे बीच से 70% लोग हिंदुत्व के नाम पे उसी बीजेपी आरएसएस के साथ खड़ा हो जाता है जो हमारे को गुलाम बनाता है और हमारे हक अधिकार छीनता है। तो इस लड़ाई को अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर भविष्य में हमारे बच्चे स्वतंत्रता में सांस लें और तरक्की करें, तो हमें इस लड़ाई को सार्थक तरीके से एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आज जो केंद्र के अंदर सरकार है वो तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। एक एक करके सारे संसाधन बिक रहे हैं। तो जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर रिजर्वेशन बचेगा कहाँ। वो सही कह रहे थे कि प्रोफेसर हमारे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस हमारे नहीं है, और देश के जो प्राकृतिक संसाधन है जहां अरबों खरबों रुपया पैदा होता है उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पहले से आउटसोर्स कर दिया गया है। और तो और लेटरल एंट्री लाकर जो हमारे लोग सिविल सर्विसेज में आ जाते थे, अब तो उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो वहां भी कोई संभावनाएं हमारे लोगों के लिए बची नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है और टुकड़ों में लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अगर हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो तमाम जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, मैं एक बात बता दूं, हम सबके ब्लड के नमूने लेकर अगर कहीं दुनिया में अच्छी लैब में जांच कराई जाए तो रिजल्ट ये आएगा कि हम सबका खून एक है, हमारे पूर्वज एक थे। और हमें अब जाति तोड़कर समाज को जोड़ना चाहिए, आपस में एकजुट होना चाहिए। हम लोग अगर आपस में एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जल्दी जीत लेंगे। अदरवाइज अगर हम इसी तरह टुकड़ों में जातियों में बटे रहे और SC ST OBC माइनॉरिटीज टुकड़े टुकड़ों में होकर अपनी लड़ाई को लड़ता रहा तो फिर आप मान लीजिए कि हम इस लड़ाई को कभी जीत नहीं पाएंगे। और आने वाले समय में हमारे आने वाले बच्चे हमें कोसेंगे, वो कहेंगे कि हमारे इन बुजुर्गों के होते हमारा रिजर्वेशन छीना, इनके होते हुए सारा नुकसान हुआ और ये लोग चुप लगाए रहे। तो ये जिम्मेदारी हम जो जागरूक लोग हैं हमारी ज्यादा है। और उसमें भी जो माननीय सांसद और माननीय विधायक गण है, मंत्री गण है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। आप अपनी पार्टीज में रहते हुए, अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहते हुए, वफादार रहते हुए भी कम से कम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तो हम बना ही सकते हैं। जहां हमारे समाज के मुद्दों की बात है वहां तो कम से कम मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें, वहां तो लड़ें। अगर हमारे समाज के हक अधिकार छीनते रहेंगे और हम अपनी कुर्सी बचाते रहें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कुर्सी तो किसी परमानेंट होती नहीं है, एक न एक दिन तो सबकी जाती है। तो समाज का अगर सब कुछ छिन गया और आप अपनी कुर्सी कुछ साल सुरक्षित भी रख लेंगे तो उससे मिलना क्या है। मैं समझता हूँ हमारे आने वाली संतानें हमें कोसेंगी, वो हमें कहेंगे कि इनके रहते सब कुछ छिना था, अभी भी मौका है। तो मैं तो आप सबसे आह्वान करता हूँ, जैसे ही कोरोना थोड़ा कम हो, इसको एक ऐसी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए जिसमें आमने सामने बैठ के चर्चा हो और एक रणनीति बनाकर कुछ ठोस निर्णय हम लोग लें और एकजुट होकर इस लड़ाई को हम लोग लड़ें, तभी शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और मैं पुनः आज सबको ज्योतिबा फूले जी की जयंती की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मीटिंग में जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फूले। Thank you, sir, for valuable and inspiring address. Now I hand over the mic to Abuli. The true charity is not giving bread or money, but providing employment. Our next guest speaker, Honorable Shri G. Karunanidhi, is going to talk on reservation in promotion to OBC employee.
I would like to call Mr. Rohit Harne to introduce our honorable guest speaker. Thank you, ma'am. On this auspicious occasion, I would like to invite Sri Karunanidhi sir. He is the president of All India Union Bank OBC Employees Welfare Association, also a general secretary of All India Federation of OBC Employees Welfare Association, representing nearly 45 OBC associations of central government and public sector undertakings. He also awarded for social justice at USA on 9th Feb 2011 for lifelong contribution to social justice center, exposed the zero reservation policy adopted by the central government in medical admission under all India quota seats contributed by the state, also written book on 69% Reservation Act in Tamil. Now, I invite Honorable G. Karunanidhi sir to share their valuable thoughts on this occasion. Thank you. Good evening to everyone. At the outset, on behalf of our AIOBC Federation, my revolutionary salute to the great social revolutionary Jyotiba Phule on his 194th birth anniversary. Phule throughout his life fought for justice, social justice, gender justice, fought against discrimination among people based on caste and religion. Jyotiba Phule, Sagu Maharaj, Baba Sahib Ambedkar, and in the South Tande Periyar all fought for social justice and against social discrimination throughout their life. The makers of our Indian Constitution envisaged that these deprived sections should have a participation in the democracy and they should be empowered. When we talk about reservation, we must remember that reservation is not about employment. Reservation is not a poverty alleviation scheme. Reservation is about empowerment. Reservation is our representation in the governance of this country. Whether it is legislature, executive, or judiciary, we should have our representation in the decision-making process. On this August 2021, our country will be celebrating its 75th Independence Day. The constitution that came into effect from 26 January 1915 has provisions towards achieving social justice. But when we introspect today, can we say that we have achieved our goal? Even the Backward Classes Commission report, the first report under the chairmanship of Kaka Kalilkar, was not even discussed. The second report, Mandal Commission report, still many of the recommendations have not been implemented. Even the implemented provisions could not reach the desired objective. Various hurdles have been created for the empowerment of OBCs in the form of applying the creamy layer, 50% ceiling, denial of reservation in promotion. I am being required by the organizers to touch on the subject of reservation and promotion for OBC. Without going to other areas, I will present my views on the given subject within the stipulated time. On August 7, 1990, when the then Prime Minister V.P. Singh announced 27% reservation for OBCs in government jobs, immediately it was stayed by the Apex Court. After 2 years, the judgment came, which all of you know. The Indira Sani judgment of November 16, 1992, not only approved the 27% OBCs in jobs, but with many riders. Now there is reservation in direct recruitments only. Even that also, the lateral appointments which the present government has introduced for direct recruitments in the deputy secretary and joint secretary level, there is no reservation for OBC and SC/ST. The Supreme Court, in its judgment on 16th November 1992 in the case of Indira Sani and others versus Union of India and others, observed that reservation cannot be extended to promotions, including for SC/ST. They gave a 5-year ultimatum. To overcome the effect of this judgment that has adversely affected the SC/ST employees, the government in 1995
brought the constitutional amendment, 77th amendment, by inserting a new clause, 16(4)(a) in the said article, so to provide for reservation and promotion for the scheduled castes and scheduled tribes. At the time of passing the amendment, honorable members in Parliament in Lok Sabha, during the discussion on 2nd June 1995, cutting across party lines, demanded that the government must include OBCs also and bring a comprehensive bill covering SC, ST and OBCs. Honorable members of the Parliament include Sharath Yadav, Nitish Kumar, Dr. Mumtaz Ansari, Krishan Dutt Sultanpuri, Ratilal Verma, P.G. Narayanan, Syed Sahabuddin, GMC Balayogi, Siti Paswan, Suraj Mandal, Anand Charan Das, Kamla Mishra Madhukar, Shrikant Jana, Bandar Dattatreya, Vishwanath Sastri, all demanded that the OBC should also be included in the amendment. Then Union Welfare Minister Sitaram Kesari assured the House that we shall consult leaders of all political parties by convening a meeting, and thereafter we shall bring a bill definitely in this regard. Based on the assurance given in the House, the amendment 16(4)(a) was passed benefiting the SC/ST employees. Article 16(4)(a) states, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of post in the services under the state in favor of SCs and STs, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. The above amendment was challenged in the Supreme Court, and while upholding the constitutional validity of the Constitution, 77th Amendment Act 1995, the Supreme Court in its judgment dated 19th October 2006 under M. Nagaraj and others versus Union of India stated that the concerned state will have to show in each case the existence of the compelling reasons, namely backwardness, inadequacy of representation, and overall administrative efficiency before making provisions for reservation. Again, in the case of UP Power Corporation Limited versus Rajesh Kumar and others, dated 27th April 2012, Honorable Judges Dalvir Bhandari and Deepak Mishra of Supreme Court, in the judgment dated 27th April 2012, upheld the High Court order of Uttar Pradesh and stated that the view of the High Court is based on the decision in M. Nagaraj case, as no exercise was undertaken in terms of Article 16(4)(a) to acquire quantifiable data regarding the inadequacy of representation of the SCs and scheduled castes in public services. In this regard, it must be noted that the representation of OBCs in the services of the government and public sector undertakings is not only inadequate, but very, very minimal. As per the statistics given by the Department of Personnel and Training in their annual reports, the OBCs represent roughly 5% in Class 1 services. The following data will testify my statement. In the Group A services, as of 2016 January, out of 84,705 Group A officers, the OBCs are just 11,016, that is 13% only. In the IIM and IIT, where the representation of in the faculty positions, in IIM, out of 784 faculty positions, there are OBCs are just 27 only. In IIT, similarly 8,856 faculty positions, the OBCs are just 329. In the 40 central universities across the country, the professors, total professors are 1,125. OBC is 0. Associate professors, total professors 2,620. OBCs are just 0. This is the position of 40 central universities. In central staffing scheme of the deputy secretary grade, at the level of in the central government, at the level of secretary, there are 89 posts. OBCs is just 0. In additional secretary, there are 93 posts where the OBC representation is 0. The joint secretary, out of 275 posts, OBCs are just 19. In the director post, 288, OBCs are just 40. Even in the deputy secretary level, 79 posts, OBCs are just 29. This is the
data given in the Rajya Sabha on 27th June 2019 by the government. Just as there is in Group A post also, in nearly 27 departments, there is no representation of OBC in Group A post. Similarly, in Group B post, in 23 departments of the central government, not a single OBC is there in the Group B post also. This is the position, representation of the OBC in the central government job after nearly 75 years of independence. Article 16(4) of the Indian Constitution states, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. The OBCs constitute nearly 60% of the Indian population, but are provided only 27%. But even that also, they are having a share of 5% in the governmental services. The government is having the quantifiable data to show that the OBCs are inadequately represented in every cadre and in every department, and this justifies the demand for reservation in promotion. Without reservation in promotion for OBCs, the representation of OBCs in Group A posts or top level posts in public sector undertakings, including the banks and central education institutions at the level of professors, will never reach the minimum of 27%. We, the OBCs forum, across the country, have to exert pressure on the government, on the parliamentarians, to bring in a constitutional amendment to provide reservation in promotion for OBCs as was done for SC and ST. I thank the organizers, Rashtriya OBC Sangh, for inviting me and sharing some of my views. My respects to Justice Iswaraya, former chairperson of NCBC, for his valuable guidance throughout our efforts. Thank you. Once again, my thanks to all. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. Really, employment is today's big question. Now I request Anil Panchale to introduce our guest speaker, Honorable Dr. Seema Mathur. She is going to talk on Bharat Ratna to Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule. Anil sir, start please. Hello, thanks ma'am. I am going to introduce Honorable Dr. Seema Mathur madam. Dr. Seema Mathur madam is an assistant professor of political science in Kalindi College, University of Delhi. Dr. Seema Mathur ma'am, also a Dalit writer, poetess, and recently has been awarded with Nari Shakti Excellence Award on 4th January 2020 to appreciate her work for encouraging, empowering Dalit women. She is short recently and strongly representing the issues of Dalits women through various channels and platforms. More than 20 articles and research papers of Dr. Mathur ma'am have been published in various journals on issues such as Indian politics, women, human rights, Panchayat Raj, etc. They are connected to many social and women's organizations also. I request Honorable Dr. Seema Mathur ma'am, please come and share your valuable thoughts on this occasion. Seema ma'am, can you please unmute yourself? Thank you, Anilji, for this lovely introduction and very good evening and Jai Phule, Jai Ambedkar. And I'm very happy for this webinar that, and I also congratulate to all the organizers and eminent speakers over here. They presented their speech and talk with the data. So it is very important, and to organize this webinar on the occasion of Mahatma Jyotirao Phule's birthday. So I'm very glad to be here. And I also thank you, Sachin Rajurkar ji, to invite me here. First of all, I'm
मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि जो अभी जो सभी एमिनेंट स्पीकर्स ने जो डेटा रखा हमारे सामने, जो उन्होंने बात रखी डिफरेंट डेटा के साथ ऑन अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स, their representation is very less. So you can just imagine what is the representation of women. I'm saying women from different marginal sections of this society. So just we can imagine that very less, very, very less. अगर हम भीमराव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, जो फुले दंपति है, उनके स्ट्रगल को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि वो एक ऐसे समाज में, जो 19वीं शताब्दी का जो समाज है, patriarchal society है, based on varnashram system that is divided into Brahman, Kshatriya, Vaishya और Shudra. Patriarchy है, so women are more vulnerable as women and as they belong to marginal section of this society. They don't have any kind of right as Bahujan or Shudras do not have. The whole situation, whole scenario changes when we talk about the particular women from other backward community, OBC community. Their representation in every sector, though is it political or economic or social, is very, very less. Or we can say they are not represented anywhere. महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना जो स्ट्रगल किया, सच्चे अर्थों में वो फेमिनिस्ट थे। एक छोटा सा जीवन, उनके जीवन का हिस्सा मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब बहुत क्योंकि शादी बचपन में हो गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की, और उनके पिताजी को ये चिंता होने लगी थी कि उनके कोई संतान नहीं है, तो इसीलिए ज्योतिबा फुले जी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस पर ज्योतिबा फुले जी एक शर्त रखते हैं अपने पिताजी के सामने और ये कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है कि मेडिकल होना चाहिए, दोनों का मेडिकल होना चाहिए, सावित्रीबाई फुले का भी मेडिकल होना चाहिए और ज्योतिबा फुले का भी मेडिकल होना चाहिए, ये बात कहते हैं। तो उनके पापा जो है पिताजी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि सावित्रीबाई फुले का मेडिकल चेकअप कराते हैं कि अगर उनमें कोई कमी है तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन इस बात पर जो है वो डिसएग्री कर जाते हैं कि नहीं, ज्योतिबा जो है वो किसी भी तरह का मेडिकल नहीं कराएंगे और उनको हार माननी पड़ती है अपने बेटे के सामने। और इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो फुले दंपति 19वीं शताब्दी में जब पूरे समाज में ऐसी कुप्रथाएं हैं, प्रथाएं नहीं, ऐसी कुप्रथाएं हैं जहां पर कन्यावध है, बाल हत्या है, सती प्रथा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड तो अभी भी है, देवदासी जैसे सिस्टम है, जोगिनी प्रथा है, नरबली प्रथा है। और जो प्रीवियस स्पीकर्स है उन्होंने इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बताया, हमारे सामने बात रखी कि किस तरह से महिलाएं जो है शूद्र जो है इस समाज में सभी तरह के अधिकारों से वंचित रहे, इसलिए हम उनको वंचित और शोषित समाज के रूप में देखते हैं। तो उस समाज की भलाई के लिए फुले दंपति उस समय काम करते हैं, खासकर शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना था कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक इस समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। और उस शिक्षा की जब शुरुआत करते हैं फुले दंपति, जब वो स्कूल खोलते हैं तो वही समाज जो ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी है वो उनका विरोध करती है। और सावित्रीबाई जब शिक्षा के लिए जाती हैं, स्कूल में जब जाती है तो उनको बहुत तरीके से अपमानित किया जाता है, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता है, थूका जाता है और
इस बात से दुखी होकर जब वो ज्योतिबा फुले जी से कहती हैं, तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, हमें और बहुत सारे काम करने हैं, हमें बच्चियों के उत्थान के लिए, शूद्रों के उत्थान के लिए। और इसी कड़ी में क्योंकि जब बच्चियां पढ़ने आई हैं, दूसरे छात्र पढ़ने आ रहे हैं उनके स्कूल में, तो जाहिर सी बात है कि पानी भी पिएंगे, तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था उस समय। जैसा कि प्रीवियस स्पीकर भी बता रहे थे कि जानवर उस सार्वजनिक जगह से, तालाब से, पॉन्ड से पानी पी सकते थे, लेकिन शूद्र पानी नहीं पी सकते थे। तो इसलिए वो अपने घर के जो कुआं है वो खोल देते हैं शूद्र बच्चों के पानी पीने के लिए। और ऐसी ही घटना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान सत्याग्रह करते हैं 1927 में पानी के पीने के अधिकार को लेकर, जिसमें उनके साथ हजारों लोग जो है हिस्सा लेते हैं। और सिंबॉलिकली वो ये दिखाते हैं कि यस, वी हैव द इक्वल राइट to get the resources which are available in this society. इस तरह का जो स्ट्रगल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने हर तरीके से समाज में महिलाओं की स्थिति खास करके बदलने की कोशिश की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई तरह के फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और प्रीएम्बल और दूसरे कई आर्टिकल के थ्रू महिलाओं की इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एवरी सेक्टर ही इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी जब हम आज देखते हैं महिलाओं की स्थिति, खास करके मार्जिनल सेक्शन से जो बिलोंग करती है महिलाएं, उनकी स्थिति कभी ऐसा लगता है कभी कभी कि जस की तस बनी हुई है। क्योंकि जहां पहले कन्या वध हम देखते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड देखते हैं, तो फीमेल फिटिसाइड अभी इतनी तेजी से गति पकड़ रहा है कि हम बच्चियों को पैदा होने से ही पहले मार देते हैं। अगर वो बच भी जाती है तो जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाती है तो एडमिशन रेट जो है वो है कि अगर 100% लड़कियों ने स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन वो स्कूल तक आते आते बहुत कम रह जाता है। और कैन यू इमेजिन कि हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते ओनली 2% गर्ल्स आर देयर। सो ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है एजुकेशन में। महिलाएं खास करके जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें वो बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। इसके अलावा सेंसस अगर देखें 2011 का, तो उसमें आप देख लीजिए, सेक्स रेशियो देखिए, लिटरेसी रेट देखिए, डेथ रेट देखिए, और हर तरह के जो तरीके से महिलाएं जो है हर तरीके से वो पिछड़ी नजर आती है। बहुत सारा डेटा हमारे सामने अभी दिया गया यूनिवर्सिटीज में रिप्रेजेंटेशन को लेकर, जो गवर्नमेंट जो कमिटीज बनी है उनमें। और ये बहुत सोचनीय बात है कि पार्लियामेंट में अभी तक 17th लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो लड़ाई 100 साल पहले उन्होंने की थी, और वो आज अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि 33% रिजर्वेशन बिल पर कोई बात नहीं करना चाहता है, उसको पार्लियामेंट में प्लेस नहीं करना चाहता है। रादर देन कि सवर्ण लोगों के 10% आरक्षण के लिए जो बिल है वो 2 दिनों के अंदर, 48 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में पारित हो जाता है। सो ये दो कंट्राडिक्टरी चीजें हमें देखने को मिलती है कि जब भी हम विमेन की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो हर कोई जो है वो चुप रहता है, उस पर बात नहीं करता है। अभी के वेबिनार में अगर हम देखें तो in general when we are talking about the representation of marginal sections in different sectors, then we forget about the representation of women. तो जब ओवरऑल इन जनरल पर्सपेक्टिव में OBCs, SCs, STs, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, तो उनकी विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस पर हमें बात करने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी विद द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस of women have
achieved in that society. किसी भी समाज का जो उन्नति है वो उस समाज में महिलाओं ने कितनी उन्नति की है उससे ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्योंकि इस समाज में पेट्रियार्की जो पितृसत्ता है वो महिलाओं को विद इन द वॉल्स करके जकड़ के रखती है कि घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक केयर, जो लोगों बच्चों का जो पालन पोषण करना है, बड़ों की जो देखभाल करनी है, सो वो सब करते हुए भी इफ दे आर कमिंग आउट, वो अगर बाहर आ रही है, अलग अलग सेक्टर्स में जाके काम कर रही है, तब भी ये एक्सपेक्टेशंस है कि उनको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही है जो पेट्रियार्कल समाज में उनके ऊपर रखी गई है। क्योंकि एक पिक्चर जो गढ़ी गई है एक महिला की कि महिला को ये जिम्मेदारी रखनी ही है, उनको निभानी ही है, अगर वो उससे बियॉन्ड बात करती है, उनके अलग जाके बात करती है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ दोनों मेल और फीमेल दोनों को वो हाउस होल्ड वर्क है या जो और जिम्मेदारियां हैं वो निभानी चाहिए मिल करके, या वो अपने राइट्स की जब बात करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें देता है उसकी बात करती है, तो फिर उन पर कई तरह की वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, एट्रोसिटीज और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो हमें महिलाओं को जो है वो सहना पड़ता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं महिलाओं के ऊपर जहां पर जो ब्रूटैलिटी है, जो क्रूएलिटी है अगेंस्ट वुमेन, वो हमें देखने को मिलता है, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो हाथरस का मनीषा वाल्मीकि का केस हो या फिर उन्नाव का रेप केस हो। सो यहाँ पर जो कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार या हम ये कहे कि जो सो कॉल्ड इस कल्चर भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छा मानते हैं, वो जब ये बात करते हैं कि लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उनको जीन्स नहीं पहनना चाहिए, फटी जीन्स नहीं पहनना चाहिए, या उनकी जो रहन सहन पर, कपड़ों पर जब रोक टोक लगाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा उनके सामने ये सवाल होना चाहिए कि जब एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ वो घटनाएं घटती है या जो 5-6 महीने की बच्ची के साथ जब वो घटनाएं घटती है, सेम काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस, तब वो सब कहाँ लोग चले जाते हैं, तब वो बात क्यों नहीं करते हैं। या फिर जब समाज के जो रिस्पॉन्सिबल, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल मेल पर्सन है, जब वो ये कहते हैं कि अगर मेरी बहन होती तो मैं उसको तो जिंदा जला देता, जैसा कि निर्भया के केस में भी कहा गया था। और इवन जो विमेन कमीशन में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी अगर इस तरह की बात कहती है कि रात में जाने की क्या जरूरत थी महिलाओं को, सो ये एक ऐसी सोच, इस पैट्रियार्कल सोच और ब्राह्मणिकल सोच को बढ़ावा देते हैं कि if we are living in 21st century in the era of globalization, privatization, liberalization, in the world of technology, then we are just thinking about the movement, mobility of women, that they are able to go out or not. So इस तरह के जब सवाल हमारे सामने इस समय खड़े होते हैं तो वो हमारे सरकार पर, हमारी स्टेट पर सवाल खड़े करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करते हैं कि जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो उनके राइट्स का क्या मतलब वहां पे रह जाता है। और ये अलग बात है कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में या इकोनॉमिक सेक्टर में जो है वो बहुत बहुत कम है। एक बात और मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने सारे आर्टिकल दिए, हर एक आर्टिकल में उन्होंने ये इंश्योर किया कि आर्टिकल 14 अगर ये कहता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, देन आर्टिकल 15 अगर ये बात कह दी संविधान में बाबा साहब ने, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 की जरूरत क्यों पड़ी।
आर्टिकल 30-32 की जरूरत क्यों पड़ी, 330 और 332 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो विमेन का, मार्जिनल सेक्शन का बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इस समाज में रह करके अनुभव किया था कि इस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो शूद्र है उनकी क्या स्थिति है, जो बहुजन है उनकी क्या स्थिति है। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 15 के द्वारा ये कहा कि देयर विल नॉट बी any kind of discrimination based on caste, class, gender, religion and color। तो सेकुलर स्टेट की वो बात करते हैं, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जो एनआरसी का मामला है, जो दिल्ली में ओखला में जो हुआ, तो उसमें जो लीड रोल रहा महिलाओं का, कि महिलाओं ने उस आंदोलन को लीड किया और कहीं हद तक वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसी बीच उस आंदोलन को तोड़ने की कई कोशिशें की गई। तो वो किस पर्सपेक्टिव से था उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ, जहां पर भी महिलाएं जो है वो आगे आने की कोशिश करती है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। यहीं पर एक और एग्जाम्पल, जो हमारी सोसाइटी में जो मेल डोमिनेशन है, जो पुरुषों का जो आधिपत्य है महिलाओं के ऊपर, या इस सोच के साथ कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा पुरुष के साधिन्य में रहने चाहिए, वो स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं, वो सोच अभी भी जो है वो दिमागों में रची बसी है। जब भवरी देवी का केस हम सबको याद है, जब वो लड़ाई लड़ रही थी एक साथिन के रूप में बाल विवाहों को रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी राजस्थान में अक्खा तीज के अवसर पर छोटी छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती है। सो अभी भी ऐसी कुप्रथाएं जो है वो हमारे समाज में प्रचलित है, जहां पर मार्जिनल सेक्शन की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो अभी भी उसकी शिकार होती है। सो भवरी देवी के केस में जब जजमेंट आया, सो कैन यू इमेजिन, यू गो थ्रू द जजमेंट, जहां पर जज ये कहते हैं कि भवरी देवी क्योंकि वो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती है, तो इसीलिए कोई उनका रेप कैसे कर सकता है। सो ये माइंडसेट की, एक तो पेट्रियार्कल माइंडसेट कि कभी भी, बिकॉज women आर इजीली एक्सेसिबल, अवेलेबल फॉर द अपर कास्ट पीपल, फॉर द मेन, कभी भी वो उनको अपना टारगेट बना सकते हैं। दो समुदायों के बीच में अगर झगड़े की बात है, तो जो शेम ऑनर के जो टैबूज हैं महिलाओं के साथ जुड़े हुए, कि महिलाएं जो है इज्जत को संभाल के रखेंगी, उनको बचा के रखेंगी, या अगर उन्होंने कभी ये शिकायत की कि क्योंकि पर्सनल जो बात है उसको छोड़ करके, या पर्सनल इज पॉलिटिकल की जब बात होना शुरू हुई, जब महिलाओं के मुद्दे पॉलिटिकल बनने शुरू हुए, बाहर आने शुरू हुए, तो ये बात कही गई कि जो घर हैं वो बहुत बड़े रूप में जो है वो टूट रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो है अब बाहर आ रही है, अब वो अपनी संस्कृति को भूल रही है। सो जब भी महिलाएं अपने लिबरेशन की बात करती है, समाज में जो चुपचाप सहने की जो प्रवृत्ति है कि दे हैव टू स्पीक on any issue, they cannot speak against any kind of violence, physical harassment, mental torture against them। बहुत सारे एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, आप टीवी पर जो है वो देख सकते हैं कि थोड़े दिन पहले की ही बात है, जब प्रियंका रेड्डी के साथ जो है वो रेप जैसी घटना घटती है, जब वो वापस आ रही होती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है कि जब भी हम जो है वो बाहर, जो मोबिलिटी जब हमारी आउटसाइड होती है, विद इन आउटसाइड द वॉल्स, तो वो जो एट्रोसिटीज है वो महिलाओं के अगेंस्ट में और ज्यादा बढ़ जाती है। और एक स्टडी ये कहती है कि जो फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस है, उसमें मोर देन 60% जो कल्प्रिट है, ऑफेंडर है, दे बिलोंग टू देयर क्लोज रिलेटिव्स।
तो घर में ही वो सब चीजें जो है वो घटती है। तो आउटसाइड जब वो बाहर जाती है तब वो उसी तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन जब विद इन द फैमिली जब वो है तब भी उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सो महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी और अंबेडकर जी महिलाओं के ट्रू सेंस में फेमिनिस्ट होकर वो बात करते हैं, क्योंकि जब अंबेडकर जी ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो महिलाओं के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कोई भी मूवमेंट महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बिना जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसीलिए वो ये कहते हैं unity is meaningless without the accomplishment of women. Education is fruitless without education of women, and agitation is incomplete without the strength of women. जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी ये बात कही कि अगर हमें मार्जिनल सेक्शन को, ओबीसीज को, एससीज को, एसटीज को, अगर हमें रिसोर्सेज पर, जो जल जंगल जमीन की जो बात है, इस देश में जो संसाधन है जिस पर अभी तक मोर देन 90% रिसोर्सेज पर जो सवर्णों की हिस्सेदारी रही है, उनका वर्चस्व रहा है, उस पर अगर हमें अपने पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन पाना है तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एकजुट होकर के हमें साथ आना पड़ेगा। सो हमें जो है बहुजन की बात करनी पड़ेगी, मूल्यवासी की बात करनी पड़ेगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों और मूल्यों को हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हम इस समाज को एक समता मूलक समाज बना सकते हैं जहां पर इक्विटी हो, क्योंकि इक्वालिटी कहने से समाज जो है वो समतावादी नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन जैसा टूल जो है ये एंश्योर किया रिजर्वेशन के माध्यम से कि समाज में जो वंचित रहे सदियों से, उनका भी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उसी टूल को, रिजर्वेशन को लोग जो है वो लगातार खत्म करने पर जो है वो तुले हुए हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर के सेंस में हो, चाहे वो अलग अलग तरीकों से जो है बात कर रहे हो, चाहे वो कॉलेजियम हो, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, और ये सब जो है जो बात हुई है अभी तक, तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करने की बात है। बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध जो है इस समाज में देखने को मिलता है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो समाज के सो कॉल्ड सवर्ण लोग है। लेकिन अगर ट्रू सेंस में ये देखा जाए तो एक्चुअल में दे आर यूजिंग the all benefits of reservation in true sense, क्योंकि more than 90% resources पर उनका हिस्सा है, संसाधनों पर उनका हिस्सा है, पॉलिटिकल पावर उनके पास है, इकोनॉमिक पावर उनके पास है, सोशल पावर उनके पास है। तो रिजर्वेशन किस तरह से, क्योंकि अगर ओबीसी की बात करें तो 20% रिजर्वेशन होने के बावजूद अभी भी हम जो है ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो सरकारी नौकरियां हैं, सेंट्रल जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, सेंट्रल जॉब्स की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि ओनली द 20% रिप्रेजेंटेशन इज देयर। तो पॉपुलेशन तो जो है हम अगर बात करें तो 41% है, और मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो 53% था। तो जो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन अगर है हमारे पास 27% है, तो वो 20% भी अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। एससी और एसटीज की भी अगर बात करें तो उनका अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दे आर नॉट कमिंग इनटू द एजुकेशन सेक्टर, पॉलिटिक्स और अदर सेक्टर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं
जो इस पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है और जो ये वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज है, वहां पर जो है वो एकजुट होकर इस तरह की मानसिकताओं को तोड़ते हुए हमें लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा। तभी हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जो हमारा संविधान भी इंश्योर करता है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसीलिए हमें एजुकेट होना पड़ेगा, एजिटेट यूनाइट होना पड़ेगा और फिर हमें एजिटेट करना पड़ेगा। स्ट्रगल हम तभी कर सकते हैं जब हम एजुकेट होंगे और जब हम ऑर्गेनाइज होंगे। सो इसीलिए महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनके इक्वल प्रोपोर्शन की बात करनी पड़ेगी। तभी जो है सच्चे अर्थों में समाज जो है वो बराबरी का समाज होगा। जी। Okay. Thank you so much, ma'am. Now, Mr. Rishabh Rao to introduce Honorable Dr. Ashok Jyotiba. Just a minute, sorry. Thank you so much, ma'am. Now I hand over to Dr. Varsha Vaidya. Thank you, Apolline. Now I invite Honorable Hansraj Jangid, Working President of AIBCF of India, to deliver a message shortly in 2 minutes. Honorable Hansraj Jangid. Not present. Please move to the next speaker so that we can have Ansaraji when he comes back. Okay. Now I invite Honorable Jajula Srivanas Gaud, President of BC Welfare Association of Telangana, to give us a valuable message. Honorable Gaud, sir. Hello. Dear all members, good evening. This is Jajula Srinivas Gaud, President, TSBC Welfare Association. Today, we have celebrated Jyotiba Phule 195 birth celebration at Hyderabad. In the state headquarters, we have organized hug meeting at Amberpet, Hyderabad. So many leaders, so many ministers, so many various party leaders, like that Honorable Minister Ital Rajendra, BJP OBC Morcha President Lakshmanji, Adevidanga OBC MPC MP Forum ex-President Hanmantarao, and so many leaders participate, and thousands of people gathering today. So, on the occasion of demands, discuss the demands today, reservation in Parliament, Assembly and Parliament not than 50%. Remove the creamy layer and reservations in OBC employees for promotions. We are demanded for Jyotiba Phule, name of newly constructed of Parliament in Delhi, in name of Jyotiba Phule Bhavan, and releasing postal stamp on the name of Jyotiba Phule. And demanded for and holiday. Some April 14th, Ambedkar Jayanti, the Indian government declared as holiday. So, as per Mahatma Jyotiba Phule Jayanti, April 11, you are demanded government, Indian government, declare the national holiday and constitute
construct the Jyotiba Phule Bhavan at national capital, that is Delhi. They construct the Jyotiba Phule Bhavan at national capital Delhi. Our OBC situation in central level, after 74 years independence, no separate ministry, no allocation of budget, no promotion reservation, no caste census, or any sector negligence the BCs. BCs are the central government and state governments looking the orphans. So humbly requested all India leaders and elders and movementers, please initiate the JAC, Joint Action Committee, a formation the JAC to oppose the central government and state government single demanded proportionality reservations in India. Recently, EWS reservations provide the EWS reservations. So BCs are representations, reservations, proportionality reservation. Mainly BCs are very negligent. BCs are very, very bad situations. Even though Supreme Court also, recently Maharashtra Maratha case, Supreme Court given the so many so Supreme Court is very bad opinion. So we are demanded provide reservations in judges appointments, mainly High Court and Supreme Court judges appointment. Judges appointment, we are demanded against the reservation judgments. So we are demanded in Telangana BC Welfare Association strongly fight for Telangana state government. And recently last year, All India OBC Mahasabha conducted in this Hyderabad. So you are organized so many issues, so many demands. Please Joint Action Committee, formation of Joint Action Committee in central level, central government and state government. Phule Jayanti celebrations conducted at national level, not then state level. So giving me opportunity, thank you for everyone, everybody. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable message. Now I request Honorable Advocate Dharmendra Singh Kushwaha, OBC Morcha, to deliver a message within 2 minutes. Honorable Advocate Dharmendra Singh Kushwaha. Not available? Next. Now I request Honorable Jaspal Singh Kiwa, State President of AIDCF, Punjab. I request you, sir, deliver a message within 2 minutes. आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर नमन करते हुए सभी महानुभवी व्यक्तियों को नमस्कार करता हूं। आज का जो वेबिनार ओबीसी महासंघ की तरफ से किया जा रहा है, उसमें बहुत ही अनुभवी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे हैं और उनको सुनकर अच्छा लगा, एक अच्छा संदेश गया है। सभी ने अपने अपने हिसाब से अच्छा निचोड़ निकाला है। महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने धर्म के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए, जिसमें
समाज में फैली कुरीतियों को कम करने के लिए बल मिला। एक तो उन्होंने ये बहुत बढ़िया समाज के लिए बहुत बढ़िया काम किया, और शिक्षा के विस्तार के ऊपर बल दिया, ये भी बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने उस टाइम में इतना बढ़िया काम किया जबकि पूरे देश में शिक्षा का अभाव चल रहा था। ऐसे ही उन्होंने अपने निजी अपमान को, जो वो एक शादी में गए थे तो वहाँ पर ब्राह्मणों के लड़कों ने उनको अपमानित किया, निजी अपमान को वो बीसी समाज में, खास करके दलित और बीसी समाज में उस बात को लेकर गए। उस बात से उनके अंदर एक ज्वाला धधकने लगी और उस चीज़ ने उनके हमारे समाज को, बीसी समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और आज के दिन में जितने भी बीसी संगठन जुड़े हैं हमारे साथ, लगभग 15-16 बीसी संगठन जुड़े हुए हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से आज के वेबिनार को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूं और ये भी चाहता हूं कि आगे से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और ऐसे ही जन जागरण जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, चलाए जाने चाहिए सभी बीसी संगठनों के तरफ से। बाकी सरकार की तरफ से भी कई जन जागरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने बताया कि मोदी सरकार ने काफ़ी पहले की सरकारों के बनस्पत कई ऐसे प्रोग्राम चलवाए हैं जो अच्छे काम किए हैं, पर फिर भी जितनी पॉपुलेशन है समाज में, बीसी समाज की 52% जो कैलकुलेट की गई है, उस हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। हमें भूख तो 4 रोटी की है और हमें मिल रही है आधी रोटी भी नहीं मिल रही, तो उससे हमारा सुधार होने वाला नहीं है, उससे बीसी समाज की अपलिफ्टमेंट होने वाली नहीं है। इसके लिए और प्रोग्राम चलाए जाना चाहिए। मैं ये डॉक्टर लक्ष्मण जी को खास तौर पर कहना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर इस टाइम बैठे हैं और उनकी सरकार बात सुन सकती है और उन्हें बीसी समाज का दर्द भी है। परंतु इन सब के बावजूद जो मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा चलने चाहिए। मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरा 2 मिनट की टाइम है और मेरे से बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, जो कोई डॉक्टर है, कोई हर क्षेत्र में अपना अपना अद्वितीय काम किया हुआ। मैं तो बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस करना आता है, हाँ, और बीसी समाज का दर्द भी रखता हूँ। और पंजाब में बहुत से बीसी लोगों को ऐसे जोड़ रखा है कि जो जागरूक होकर पंजाब को पूरे देश के स्तर पर लेके जाना चाहते हैं। मैं खास तौर पर आज हरी जी, डॉक्टर हरी जी और राम लीड इंडिया, वर्षा जी, अबोली ठाकरे जी और सचिन राजूलकर जी को खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ा। और ख़ास तौर पर जो मेरे मेंटर डॉक्टर अपने जस्टिस वी ईश्वरिया जी, उन्होंने मुझे इस तरफ ओबीसी के माध्यम में मुझे जोड़कर आप के स्तरीय लीडरों तक मुझे जोड़ने की उन्होंने प्रयास किया है और मैं जुड़ा हूँ। उनके आदेश पर काम कर रहा हूँ पंजाब में। मैं सभी को इस प्रोग्राम में बधाई देते हुए, नमन करते हुए सभी को बधाई देता हूँ। नमस्कार जी। Thank you, sir. Now I request Honorable V.R. Joshi, Director BC Department of Kerala, to give us a valuable message within 2 minutes. Please. Respected leaders of OBC Mahasangh, most respected Ishriya ji and distinguished guests and esteemed friends. Our hearty greetings from the soil of Sri Narayana Guru. We are paying tributes to Mahatma Jyotiba Phule by organizing a webinar. I hope the webinar will inspire and motivate the downtrodden people of India.
Mahatma works towards the eradication of untouchability and caste system, and the efforts in empowering women are still inspiring. In this webinar, we are discussing few very important demands. I support all these demands. These are not mere demands, but rights of the depressed classes. What we are asking is not a charity, but parity with others. The Constitution assures all its citizens to secure justice, social, economic, and political. But the justice is not delivering. We are under fear that the Parliament and the Supreme Court are trying to review the fundamental rights and the basic structure of the Constitution. I appeal all the SCs, STs, and OBCs people of India to join together. We are the majority. In democratic country, we need not beg for justice. We can attain power. We should get a representation in judiciary. We demand reservation in higher judiciary, without which the laws enacted in state legislature and union parliament will not be scrutinized in an unbiased way. Before concluding, I request all the leaders to raise strong demand to caste census as part of the decennial census of India 2021. This data is the most important for the welfare and the developmental activities and for policy decision on social justices and representation quota. I thank the organizers for giving this opportunity. I wish the webinar all success. Jai Hind. Thank you, sir. Now I request Honorable Rakesh Ji Yadav, Bihar Seva Sansthan, Bihar, to deliver a message within 2 minutes. Honorable Rakesh Ji Yadav. हाँ सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के आयोजक को शामिल सभी बंधुओं का बहुत आभारी हूं कि मुझे मौका मिला। हालांकि 2 मिनट में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम जो भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा फुले की जो आज जयंती है, और ऐसी महान विभूति को पुनः सादर जो नमन। हम जब उनके कार्यों को, उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे वह महान क्रांतिकारी कार्यकर्ता, समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले शास्त्रों परंपरा की शुरुआत करने वाले आधुनिक भारत के पहले विचारक थे। महात्मा फुले हैं, उनसे पहले जो हमारे शास्त्र थे, जो उनमें वो किस्से कहानियां हैं, सारा समाज उनको सत्य मानता था, लेकिन उनको वैज्ञानिक कसौटी पे कस्ते का जो प्रथम बार किसी ने कहा तो महात्मा फुले ने किया। Ma'am, can you please continue with the next, because I think there is some internet issue. Okay. Hello. 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 हेलो, मेरी आवाज कौन नहीं? हेलो हेलो हाँ सर, We can hear you. Please continue. Okay. Now I request Honorable Ayaz Ahmed Qureshi, Engineer at Public Works Department, Jammu and Kashmir, to deliver a message within 2 minutes. Ayaz Ahmed Qureshi. Is also not available. Now, मेरी आवाज जा रही है? I hand on the mic to Boli Thakre. Thank you. Next.
Now I request Mr. Rishabh Rao to introduce Honorable Dr. Ashok Jyotide, sir, National Coordinator of Rashtriya OBC Mahasangh. Dr. Ashok Jyotide sir is a chief reformer in the field of education and also a prominent social worker activist in the area of East Vidarbha. Dr. Jyotide sir is a secretary of Chanda Shikshan Prashikshan Mandal Chandrapur, a renowned educational institute in East Vidarbha. Dr. Jyotide is also a national convener of Rashtriya OBC Mahasangh. He arranged many grand programs in East Vidarbha for awareness of other backward classes successfully. He also worked in the development of separate Vidarbha state and involved in a separate Vidarbha state movement. Dr. Jyotide mainly aggressive for the social uplifting of the OBC society for the OBC movement. Dr. Jyotide actively participated almost in all activities of OBC fertility. In I request Dr. Jyotide sir to deliver their presidential address. धन्यवाद। आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तथा इंडिया लीडर फाउंडेशन की तरफ से आज वेबिनार जो रखा गया उसके उपलक्ष्य में आज जो विषय यहाँ पे रखे थे उसके विषय के ऊपर आज चर्चा बहुत हुई। आज जो महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी 194वीं जयंती है और 6 साल बाद इनके जन्म वर्ष को 200 साल हो जाएंगे। ऐसे महामानव के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तथा इंडिया लीड फाउंडेशन की तरफ से ये वेबिनार आयोजित किया गया और ये वेबिनार में हमारे मित्र डॉक्टर हरि इपन्नापल्ली इन्होंने अच्छा ओवरऑल आज के टॉपिक के बारे में सभी कुछ बताया। हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन भाऊ तायवाड़े इन्होंने महात्मा जी के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन चयन के ऊपर अपने विचार रखे। आज 200 साल बाद भी ऐसे क्रांतिकारी विचार आज में प्रासंगिकता के लिए और भी मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मंत्री साहब विजय भाऊ वडेट्टीवार जी इन्होंने भी अपने ये जयंती के उपलक्ष्य में वेबिनार में अपना विचार प्रकट किया। अपने विचार में उन्होंने ओबीसी जन जागृति ओबीसी की तरफ से राज्य की तरफ से जो मांगे ओबीसी की तरफ से आती है उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया उसके लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ उनका आभार व्यक्त करता है। हमारे सम्माननीय आदरणीय जस्टिस साहब ईश्वरिया साहब जी जो हर वक्त राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के कार्यक्रम के लिए या कुछ भी ओबीसी के प्रश्न के लिए अपना वक्त देते हैं, उनके जो उन्होंने आज वेबिनार में विचार रखे हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज केंद्रीय मंत्री जी माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब भी यहाँ वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करते हुए ओबीसी की जो मांगे है वो पूरी करने के लिए राज्य तथा सरकार केंद्र सरकार ने प्रयत्न करना चाहिए। ये जो विचार उन्होंने रखे उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर डॉक्टर के लक्ष्मण साहब उनके विचार प्रशंसनीय है। उनकी पार्टी सत्ता में है, जो ओबीसी की जो डिमांड आएगी ओबीसी की कोई भी डिमांड 340 के कलम के अंतर्गत ही आएंगी, वो सभी डिमांड्स केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने पूरी करनी चाहिए ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार हरियाणा क्षेत्र के जो खासदार महोदय है राजकुमार जी सैनी साहब उनके विचार इसके पहले भी हमने सुन लिए थे। आज भी उनके विचार सुन के ऐसा लगता है कि ओबीसी की ताकत बढ़ाने के लिए उनके जैसे महान लोगों की ओबीसी समाज के लिए जरूरत है। आज वो 68 साल के हो गए फिर भी
आज ओबीसी के लिए वो जवानी है और जवानी रहेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं उनको देता हूं। उसी प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली के मिनिस्टर है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो विचारों को रखा, 340, 341, 342 तथा अल्पसंख्यक, इन सब लोगों की ताकत अगर एक रहती है तो ये ओबीसी प्रश्न या पिछड़े जातियों के सभी प्रश्न एकजुट होकर अपने को उसका कहीं तो भी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। उसी प्रकार जी करुणानिधि जो ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के सचिव है, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उसी प्रकार से डॉक्टर सीमा माथुर, जेजुला जी, श्रीनिवास जी गौड़ जी हमारे मित्र, उसी प्रकार से जसपाल सिंह जी, उसी प्रकार वीआर जोशी जी जो केरला से हर वक्त ओबीसी के कोई भी कार्यक्रम के लिए चाहे हैदराबाद में चाहे दिल्ली में हो आते रहते, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उसी प्रकार से राकेश यादव साहब जो बिहार से है, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। अभी मान्यवरों का ये वेबिनार में मैं उनका सभी स्वागत करता हूं और इस प्रकार की कामना करता हूं कि आने वाले समय में ये सभी लोग कहीं तो भी एकत्र आए और जो ओबीसी की जो मांगे और अधिकार है 340 के अंतर्गत जो टॉपिक आज अपने सामने आज हमने रखे वो सभी प्रश्न है, वो प्रश्न कहीं ना कहीं उनका हल निकलना चाहिए, ऐसी कामना करते हुए मैं अध्यक्षीय भाषण यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अच्छा, सरांना बोलवायचं आता, राजोरकर। हॅलो, So before we invite our brother Sachin Rajurkar for the vote of thanks, if we have any other speakers that we missed, that they came back and joined us, please take a look at it and invite them. And then we also request Justice Ishwaraya ji and OBC Mahasangh ke Adhyaksh Dr. Baban Taiwade ji to present the today's resolutions for adoption. Hari, Yes. please kindly, you only read out and we will adapt. Yes. No, we prefer you both present, sir. No, Sachin says, let the Hari read out and we will adapt. Yeah, we will do that. Before we go to the resolutions, Mr. Thakreji, anybody else that we missed? So no, that sir. they can get No an one is there. opportunity to. No one. Sachin ji, ma'am, do you have anyone is anybody there? else that we need to invite as a speaker? Continue, sir. Okay. Thank you so much. Let me have the opportunity as given by Justice Ishwaraya ji and Dr. Baban Taiwade ji to present today's resolutions to in front of you for adoption so that we could take them forward to the national level through our Dr. Lakshman ji and through all other responsible parties who could influence the central government to implement them as soon as possible. That's what we are looking for. So let me share them with you. Give me 1 second. Yeah, you can share in the screen also. Yes, that's what I'm doing. Do you see my screen? Okay, 1 second. Okay, so let me read the today's resolutions. If you can all see the screen. So Rashtriya OBC Mahasangh, All India Backward Classes Federation, and all other OBC organizations who joined us today in this national convention, having discussed and deliberated through this national convention with the national leaders of the OBC on the occasion of 194th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule, demands the government of India by passing the following resolutions.
Number 1, to preserve, protect, to implement the fundamental rights prohibiting the discrimination by providing the adequate representation in the education and employment. The socio-economic caste census are required and should be conducted. Number 2, the 54% of the OBCs entitled and deserves for the separate ministry in the central government providing separate budget for their upliftment. Number 3, the creamy layer and categorization among the OBCs shall ensure 27% reservations without de-reserving the single seat. Number 4, Justice Rohini Commission shall be banned and a new commission under Article 340 of the Constitution of India shall be appointed by the President of India to investigate the conditions of socially and educationally backward classes. Yes. That shall be disbanded. Shall be disbanded. Let me repeat. Justice Rohini Commission shall be disbanded and a new commission under Article 340 of the Constitution of India shall be appointed by the President of India to investigate the conditions of socially and educationally backward classes and the difficulties and which they labor by conducting the OBC caste census for making necessary recommendations and categorize the OBCs to reach out to. Hari, Yes. Hari, 1 minute. Difficulties under which they labor. Under, not under. Under. Yeah, difficulties under which they labor. And the difficulties under which they labor by conducting the OBC caste census for making necessary recommendations and categorize the OBCs to reach out the fruits of the reservations to the most deserved categories also. Number 5, the Constitution shall be amended to provide reservations for OBCs in the state and union legislatures and also in the judiciary. Number 6, to award Bharat Ratna to Mahatma Jyotiba Phule and Savitri Bhai Phule. Number 7, provide reservations in promotion to the OBC employees to have adequate representations. So the corrected version will be distributed to all of you. And please, we need somebody to pass this resolution and somebody to second, and all in favor say yes, so that this can be passed unanimously and distributed through our Dr. K. Lakshmanji to the Government of India and the Prime Minister and the President of India, and also to the media for their publications. Yes. 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 Yes, sir. Yes. Yes. Yeah, thank you so much for unanimously adopting these resolutions. Justice Ishwaraya ji will provide a corrected version of this document so that our General Secretary Sachin Rajurkar ji can distribute to all the relevant parties officially on the letterheads of the Rashtriya OBC Mahasangh and All India Backward Classes Federation with adoption in this national convention on the occasion of the 194th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule. And we sincerely thank you for adopting these 7 resolutions so that our future can be better. Our next generation can reap these benefits. Thank you so much. Sachinji, back to you. Okay. Thank you so much, sir. Now I request Honorable Sri Sachin Rajurkar, sir, Program Coordinator, National General Secretary of Rashtriya OBC Mahasangh. I would like to call Advocate Ananta Gulakshe to introduce Honorable Sri Sachin Rajurkar. Honorable Sachin Rajurkar, sir, General Secretary of Rashtriya OBC Mahasangh. He has been instrumental in the strengthening the OBC movement in East Vidarbha. He is known as scholarly personality on OBC. He has played an important role in many rights movement of other backward classes in East Vidarbha. He has been fighting against social, educational, and political injustice against OBCs for the last several years through the Rashtriya OBC Mahasangh for the past several years. He has been
consistently fighting for the rights of OBCs without any political vested interest. Considering the need of ours to bring the OBC community brings the OBC community together, they are placing special emphasis on the organizational structure of OBCs. Honorable Sachin Rajurkar, sir. जय ओबीसी। जय ओबीसी। जय ओबीसी सर। जय ओबीसी। जय ओबीसी। जय ओबीसी। Sachin sir, can you please unmute yourself? जय ओबीसी। जय ओबीसी सचिन जी, go ahead. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और महाज्योति की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा फुले की जयंती के अवसर पर आज लिया गया वेबिनार के इनॉग्रेटर आदरणीय विजय जी वडेट्टीवार, हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे मार्गदर्शक जस्टिस ईश्वरिया जी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष पवन राव तायवाड़ी जी, हमारे दूसरे मार्गदर्शक और इस वेबिनार को हमेशा प्रोत्साहित करने वाले हरि सर, इपन्नापल्ली सर और महाज्योति के प्रदीप जी टांगे और राजकुमार सैनी जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक जी जुतोड़े और जिन्होंने अभी जी आप म्यूट में है, म्यूट में है आपने, आप म्यूट में है। नहीं सर, यू आर अंडर द म्यूट, अनम्यूट करो भाई साहब। No, he is fine. Justice Ishwarya ji, he is fine. Go ahead, Sachin ji. और अभी लक्ष्मण सर जो ऑल इंडिया ओबीसी मोर्चा के लक्ष्मण सर और जिन्होंने स्पीकर के रूप में जो बात की है सीमा माथुर और हमारे साथी ऑल इंडिया ओबीसी बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जी करुणानिधि और हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन आए हैं हमारे जहांगीर जी, श्रीनिवास जाजूला जी, वीआर जोशी जी, जसपाल जी खीवा और धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा और राकेश यादव और अजाम कुरैशी जो जम्मू कश्मीर से आए और हमारे संगठन के राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, कर्मचारी संगठन हो, महिला संगठन हो और इनकी ओर से सभी जो आज के एंकर है वर्षा मैडम जी और हमारी अबोली ठाकरे मैडम जी और हमारे एमसी से सोनिया मैडम, ऋषभ राउत, वर्षा जी कोल्ले, रोहित हरणे और अनिल नथपले सर और अनंता गुलसे सर और हमारे साथ जो स्पेशल थैंक्स उसको देना चाहूंगा जो हमारे राम सर है और उनके साथ में काम करने वाले हमारे रोशन जी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है वेबिनार का और ये वेबिनार सभी सहयोग से सभी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के माध्यम से पूरा सक्सेस हुआ और उसके लिए सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और ये वेबिनार यहाँ पे खत्म हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Sachin ji. You did an excellent job of coordinating this, and you are instrumental in bringing all of us together to make this a very successful and productive session today. And there's so many dignitaries have sincerely attended this and they stayed, and our Dr. K. Lakshman is still on the session, so it's wonderful. And please prepare the resolution final version and submit to Dr. Lakshman ji and all other relevant parties, and also to the media at the earliest possible. Work with Justice Ishwarya ji and President Baban Taiwada ji to get this done.
And we really appreciate your sincere efforts. And we need you at the national level to take this movement forward. Thank you so much. Okay. Ram sir. So, Hari, yeah, now we can hear. Can you speak now if you want, Justice Ishwaraya ji? We can hear you now. अब म्यूट में चले गए भैया. No, we are Hari, able also, to you are hear also under the you. mute. Yeah, you are not hearing us for some reason. It's your local issue. I think you may have mute your computer, but we can hear you. Hari, म्यूट में चले गए आपने. No, we are fine. We are fine. under the mute. We can hear you. If you want, we can speak, Justice Ishwaraya ji. Yeah. So, Sachin ji, anything else you want to convey before we end? Sir, yeah, Ram sir, Ram sir. Dr. Ram Maruri, are you still on the session? If you are, please conclude the session. पिक्चर में लाओ राम सर को. Sir. We can end the session. Yeah. I will ask Ram sir to close the session. Justice Ishwaraya ji is back again, and probably he wants to say anything. Yeah. Sir, can we conclude the session, sir? Okay. I'll close the session. Thank you. Audio. Sir का audio. Okay, sir. Yeah, wonderful, Right. wonderful, Sachin ji, and all the people who supported in making this a grand success. Let's work together, let's connect and make sure that this movement reaches the masses. And we will edit the YouTube version and we will share it with you all. Okay. And from Delhi, Sachin Bhai Ansaras will present on your letterhead to the President, to the Prime Minister of India, President and the Home Minister, Defense Minister. Then you please cover widely, it should cover in the wide publication on All India newspapers.